जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन जन जना यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजन रंजना यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राम माधव राधे। यो विष्णुपात्रं स्वर्गराजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत संश्रित भोपाल की समस्त गौर भक्त की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। So welcome for today's session. Today we'll be discussing Srimad Bhagavatam in this 8th canto and 12th chapter will be beginning. Coming. ये नहीं arrested. So after this, actually Bali Maharaj was taken back to Sukracharya and he is going to give his consciousness back. So and so. This story is stopped here, but Sukadeva Goswami started saying a new thing. That means Sukadeva Goswami is telling another pastime with the Mohini Murti. One time, that means after hearing this incident, Lord Shiva desired to see Mohini's form. So then that's why he approaches Lord, Supreme Lord. He approaches Lord, Shiva approaches Lord, and he requests him to show his Mohini form. Because he got some Kautuhalam, that means some kind of curiosity how this form looks. So this was the prasanga. So we'll take it forward and we will be discussing this topic in this chapter. So Bali Maharaj, after that, what happened? So that we are not going to discuss here. So then after that, actually, he will be regaining, and then after that, he will defeat all the devatas. Then after that, then once again, Lord will come in the form of the Vamana, and then
he will take back all the opulences back, and he will give it back to the devatas. That's going to happen in the next. But this episode here, stop here, and then no, just we are going to see how Lord is showing his beautiful Mohini form. Here you can see like this. What is the greatness? Just bewildering some demons who are already in that bewildering state. Yes? Is there any great thing? अरे वो तो बहुत छोटा बात है. तो एक ऑलरेडी जो ऑलरेडी भ्रमित हैं रजो तमो गुणों में है और जिसको ऑलरेडी स्त्री की प्रति आसक्ति है और उनके सामने थोड़ा सा स्त्री का रूप दिखा के और वही बहुत बड़ा काम किया, ऐसा कोई मानेंगे क्या? तो उसको बहुत बड़ा विवरण करे कि सामर्थ्य है, ऐसा कोई मानेंगे क्या? नहीं है ना. तो यदि कोई योगीश्वर के सामने अपना रूप दिखा के और उनको विवरण कर पाए तो तब मानेंगे मोहिनी मूर्ति में सच में तो मोहन करने की शक्ति बहुत खूब है करके. इसीलिए भगवान अपना शक्ति सामर्थ्य को और एक बार दिखाना चाहते हैं एक्चुअली. इसीलिए तो शिव को, लॉर्ड शिवा को एक डिजायर क्रिएट किए हैं. See, Lord Shiva God desire to see this form. What is the reason behind? Lord wants to show his that Mohini Murti is the power, how she can bewilder, and such a magnanimous power she is having. Lord can have such a beautiful form, and it is going to bewilder even a great yogis also. And in this way, we can see the opulence and the glories of the Lord here in this pastime. Okay, that is the main point we have to understand here. श्री भादरायणिर्वाच वृषध्वजो निशम्येदम् योषित् रूपेण दानवान् मोहयित्वा सुरगणान् हरिः सोममपाययत् वृषमारुह्य गिरिशः सर्वभूतागणैर्वृतः सह देव्याय यो द्रष्टुम् यत्रास्ते मधुसूदनः. Translation. Yes, Sukadeva Goswami said, the Supreme Personality of Godhead, Hari, in the form of a woman, captivated the demons and enabled the demigods to drink the nectar. After hearing of these pastimes, Lord Shiva, who is carried by the air, went to the place where Madhusudana, the Lord, resides, accompanied by his wife Uma, and surrounded by his companions. The host, Lord Shiva, went there to see the Lord's form as you. Yeah. Ajita. Yeah. माया मोग्ध्यात् अवैदग्ध्यात् दैत्यानां मोहनेन किम. दैत्यों को मोहन करने से क्या बड़ी बात है. मोहयितुम सिंभुम अनौषित. अब भगवान सोचे कि अरे ये दैत्यों को मैं मोहन करके कौन सा बड़ी बात किया, कौन सा बड़ी काम की. चलो अभी इस बार मैं योगीश्वर को सर्व करूं, उनको मैं दिखाता हूं कितना प्रकार कैसा मैं मोहन कर सकता हूं. है ना. तब ना समाज मानेगा, है ना. सोसाइटी सब लोग मानेंगे तो भगवान सच में वो साधारण नहीं है, असाधारण तरीके. इसीलिए अब इस बार किसको चयन किए हैं भगवान, तो शंभु को चयन किए जो योगीश्वर है. तो लॉर्ड शिवा इज एन योगीश्वर, इज अ ग्रेट मिस्टिक and he is meditator actually. He always meditates on the, so he is always in the samadhi on the Lord. And such a powerful man he is, and in the best personality actually. If he is bewildered by the beautiful form of the Lord, then we should appreciate the glories of the Mohini. Okay. So in this chapter, Dwadashe Mohayan Shambhum Pashyantyaha Shambhuyoshita
Mohinya, so Vibramasya Asadharanam Tau Abubhud. So in this past time, in this 12th chapter, we are going to see, along with the Lord Shiva, his wife Uma, both so get build, that means get surprised. Actually, Uma gets surprised. She was thinking that till now her husband is very mystic yogi and very strong. But now he is also got bewildered and he is running behind Mohini, and by seeing that she got surprised. My God, what is this? What a beauty this Mohini is having actually. So that's why that we are going to discuss in this chapter. It is establishing, Srimad Bhagavatam always establishes the glories of the Lord again and again. So that all these jivas so can get the attraction towards the Lord, and they will be desiring only the Lord directly, not other thing else. So that our jivas, any kind of, that means attraction, if they have, all these things will be going away. So might be by this lila we can see that even one might be having some material attraction to the material forms, and now those all will go. But by this lila he can understand. If Lord takes human form, he will be so beautiful. That means even a great yogis also can be bewildered by them. That means why we have to approach here and there, then directly approach him only. So to gratify anything, it's better. Akama sarva kamo va moksha kamo udaradi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. So it is going to establish so the supremacy of the Lord. This chapter is going to do that. Next, in this first, second, and third slokas, there is no much commentary, and we will be reading the purports. Okay, purport also is third sloka. So in the first and second sloka, what we are seeing, so after hearing this whole, that means Mohini, the Lord, is bewildering all the daityas and making devatas to drink the nectar. So that is being said, and by hearing that, so Lord came along with Urusham Aruhya Girishaha. That means Lord Shiva, so he is climbing on his Urusham, bull, and then along with all his people, Sarva Bhuta Ganaihi Vrataha. He is accompanied with all his so companions, his servants, Sahadevya, along with his wife. Yayo, so he went to Ajita Bhagavan to see so his woman form. Ajita is the incarnation. That means one mantra incarnation. This is for this chapter one mantra. Sabhajito Bhagavata Sadaram Somaya Bhavaha Supavishta Uvachedam Pratipujya Smayan Harim. The personality of Godhead welcomed Lord Shiva and Uma with great respect. And after being seated comfortably, Lord Shiva truly worshipped the Lord and smilingly spoke as follows. Thank you. Smayan. Sabhajitah Bhagavata Sadaram Somaya Bhavaha. Lord received him very nicely. So by the Lord, he is received. Who? Lord Shiva, along with his wife. Then Sa Upavishta. That means he is sitting there comfortably, being situated. Then Lord Shiva is speaking like this. Pratipuja. And Shiva also worship Lord. Pratipuja Hari. Smayan. All, and also laughing. Who is laughing? Shiva is laughing. So with smiling, he is asking Hari. What? So here, one second.
What he said then? Sri Mahadeva Uvacha Deva Deva Jagadvyapin Jagadisha Jaganmaya Sarveshamapi Bhavanam Tvamatma Heturishwaraha. Mahadev said, chief demigod among the demigods, all pervading Lord, master of the universe, by your energy, you are transformed into the creation. You are the root and efficient cause of everything. You are not material. Indeed, you are the super soul or supreme living force of everything. Therefore, you are Praveshwar, the supreme controller of all controllers. So Lord Shiva didn't ask directly, okay, you show me now your beautiful woman form. No. He is first of all glorified. So he is pleasing the Lord. So to ask whatever he is desiring, to ask that, so he is first pleasing. So here, so Lord Shiva is saying, addressing Lord with what? Deva Deva. Yes? Deva Deva. This is the first and foremost rule. That means you are the Lord of the Lord. Sab, Sabka Bhagwan, Sabka Dev. You will understand this in a dialogue form, okay? So when Lord Shiva was told to address Lord Vishnu as Deva Deva, then Vishnu asked him, or told to him, Acha Shiva, you are also Deva Deva. What is greatness in this? Everyone you all also call you also Deva Deva. Tvamapi Deveshu Divisi iti tatra. Then what Lord Shiva said? Hey Jagat Vyapin. He said next. Lord Shiva said Jagat Vyapin. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं आपकी जैसा नहीं, आप जगत व्यापी हैं। मम जगन मध्यवर्तित्वात् ममापि त्वं व्याप्नोषि। मैंने जगत व्यापी बोले हैं लॉर्ड शिवा, इसकी मतलब क्या है? तो हे भगवान, आप तो जगत व्यापी हैं, मैं तो जगत की बीच में, मैंने पूरा पूरा जगत को आप व्याप्त करके बैठे हैं, इसीलिए आप मेरे लिए भी ईश्वर है, तो मैं भी आपके अंडर में ही हूं, तो इसीलिए ये फर्क है आपका और मेरे बीच में। अतः मत सहितम जगदिदम तव ईशितव्यम। तो आप जगत व्यापी हैं, माने इसका अर्थ क्या हो गया? आप पूरा के पूरा संसार को चलाने वाले हैं, उसमें मैं भी आ जाता, आप मुझे भी चलाने वाले। हे जगदीशा, ऐसा करके हे जगदीशा करके बोल दिया लॉर्ड शिवा। तब उसको सुनने के बाद, अच्छा, तो विष्णु भगवान बोल रहे विश्वेश्वरत्वेन तमोपि त्वम उच्चसे लोकैः। हे शिवा, you are also called by many people as विश्वेश्वरा। तो और मेरे में आप में क्या अंतर है? आप तो भी विश्व का ईश्वर हैं। तब लॉर्ड शिवा बोलने लगा जगन्मया, ओ जगन्मया, इज सेइंग लाइक जगन्मय। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि त्वम चिन्मयोपि जगन्मय, जगत मयत्वाद ईशितव्योपि ईश्वर, न तो अहम ईदृश। तो इधर इसकी मतलब क्या है कि लॉर्ड शिवा क्यों ऐसे जगन्मय बोले? तो हे विष्णु भगवान, हे भगवान, आप तो चिन्मय होते हुए भी जगतमय है, माने पूरा जगतमय है आप।
माने इसका अर्थ क्या है? वो जगत भी आप ही है, आप ही ईश्वर है, आप ही ईशितव्य है। ईशितव्य माने जिसको पालन किए जाते हैं वही, आप ही पालक हैं और पालित किया गया वस्तु भी आप ही है। ये क्वालिटी हमारा में तो नहीं है, हम तो वैसा नहीं है। ना तो अहम ईदृश, मैं तो इस प्रकार का नहीं हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो डिफिकल्ट है, क्लियर है? हाँ। शब्द तो ईश होने का गुण। ईशत्व नहीं, ईशितव्य। ईशत्व नहीं, ईशितव्य माने कहीं। हाँ, efficient cause and material cause, upadana karanam nimitta karanam. That's different actually. Okay, still purport. I'll explain the purpose. Let me finish this. Yeah, yeah, I'll go. आगे बोलिए आप लोग, पहले क्या बोले हैं? शिवा, लॉर्ड शिवा, किसके याद है? क्या बोले पहले लॉर्ड शिवा? पहले भगवान देव देव। तो उसको विष्णु भगवान क्या बोले हैं उसकी रिप्लाई में? आप भी तो देव थे। उसके बाद लॉर्ड शिवा क्या बोले हैं? आप तो जगत व्यापी हैं। माने इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, माने आप मेरा भी पालन करने वाला है। इसके अर्थ मतलब क्या है? जगत व्यापी बोलने में मतलब क्या है? तो शिव भगवान जगत व्यापी करके बोले, इसका मतलब क्या है कि आप मेरे भी ईश्वर है, मेरा भी ईश्वर आती है। क्योंकि आप सबका पालक हैं, या सबका आवृत किए हैं, मैंने सबको व्याप्त किए हैं। तो माने इसके अर्थ मुझे मुझे भी व्याप्त किए, माने मेरा भी ईश्वर आप ही है, मैं भी आपके अंडर में हूँ। हाँ, तब क्या हुआ उसके बाद? आप क्या बोलेंगे उसके बाद? तो हाँ, ये जगदीश है ना? तब क्या बोले हैं अब शिवा? उसके बाद जगदीश बोले, तब उसको भगवान क्या बोले इसकी? हैं? हाँ, आप भी विश्वेश्वर है, आप भी तो विश्वेश्वर हैं, आप भी जगत का ईश्वर हैं, ऐसा बोले। तब उसके लिए भगवान क्या बोले? हाँ, शिव जी बोले, क्या बोले? जगन्मय बोले। तो जगन्मय बोले हैं, तो इसका अर्थ क्या हो गया? आप पालक भी हैं, जो पाला गया वो भी आप, दोनों आप ही हैं। ऐसा हम तो नहीं है। हम तो भी विश्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, लेकिन वो हम आपकी जैसे जगदीश्वर नहीं है, है ना? माने इसका अर्थ क्या हो गया? सो जगत भी भगवान ही है ना? और पाले उसको पालने पालने वाला भी जो भगवान है। जगत भी भगवान क्यों हो गया? जगत भगवान कैसे हो गए? अभी देखिए, ये बिल्डिंग है, सब कुछ भगवान है क्या? हाँ, हाँ, भगवान की शक्ति। माने उपादान कारणम। कोई भी वस्तु के लिए दो प्रकार के कारण होता है, दो भी प्रकार हो सकता है, लेकिन दो प्रकार कारण होता है। क्या है वो? एक है उपादान कारण, दूसरा निमित्त कारण। एग्जाम्पल, एक घड़ा बनाना है। घड़ा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? हैं? मिट्टी चाहिए, और क्या चाहिए? वाटर चाहिए, और क्या चाहिए? डंडा चाहिए, पानी चाहिए। हाँ, चक्र चाहिए, चक्का चाहिए या नहीं? तो इसमें उपादान कारण क्या है? मटेरियल कॉज। घड़ा के लिए मिट्टी उपादान कारण, और बाकी सभी निमित्त कारण है, एफिशिएंट कॉज। माने जो उस पदार्थ को बनाने के लिए इमीडिएटली जो कारण बनता है, उसी को एफिशिएंट कॉज बोलते हैं। ऐसा जो पॉटर है, माने कुलाल, कुलाल की पिता कुम्हार बोलते हैं ना, कुम्हार। तो कुम्हार के पिता भी तो कारण है,
लेकिन वो एफिशिएंट काज बन सकता है? ये कुमार के पिता नहीं तो कुमार रहेगा क्या? नहीं है ना, तब तो कुमार के पिता भी कारण है। तो हम लोग कुमार के पिता को भी इधर कारण एफिशिएंट काज बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। जो इमीडिएटली काज है उसी को एफिशिएंट काज बोलेंगे। जैसा अभी डंडा चाहिए, डंडा एफिशिएंट काज है, लेकिन डंडा के लिए पेड़ चाहिए, पेड़ भी तो इधर काज है। तो क्या हम लोग इधर पेड़ को एफिशिएंट काज बोलेंगे क्या? नहीं है। ठीक है। डंडा एफिशिएंट फॉर्म में, मिट्टी एफिशिएंट मिट्टी इज मेटेरियल काज, उपादान कारण। तो वैसे इस जगत के लिए उपादान कारण क्या है? हाँ, ये जगत भी गड़ा जैसे है ना। ये गड़ा के मैंने गड़ा जैसे, गड़ा बनाने के लिए मिट्टी चाहिए और एफिशिएंट काज चाहिए, मेटीरियल काज चाहिए। एफिशिएंट काज भी भगवान है और उसको सॉरी उसको मेटीरियल काज भी भगवान है और एफिशिएंट काज भी भगवान है। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चाद्वेष्विघ्न स्वराट। लॉर्ड इज सेइंग दैट इन द पहले पहले श्लोक में ही बोला जा रहा है। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरः, अन्वय इतर है, अन्वय माने सो एफिशिएंट मटेरियल कॉज, इतरः मींस एफिशिएंट कॉज। अन्वय मींस मटेरियल कॉज, माने जिससे अन्वित हो रही है जगत। जो अन्वय माने गड़ा के लिए कौन अन्वित हो गया, गड़ा के रूप में कौन अन्वित हो गया? मिट्टी। इसलिए अन्वय माने क्या लेना है उधर उस श्लोक में? इफ मटेरियल कॉज लेना है। इतरः उससे अतिरिक्त और एक कॉज कौन है? वो एफिशिएंट कॉज। ये दोनों कौन है? भगवान। तो इसीलिए माने जगत भी भगवान है, जगत को बनाने वाला भी भगवान है, जगत को पालने वाला भी भगवान है, जगत को संहार करने वाले भगवान है, सब कुछ भगवान है। सर्वम वासुदेव। हाँ? वो सब भी भगवान का ही शक्ति। ब्रह्मा जी भी भगवान का शक्ति। जीवात्मा, ब्रह्मा जी जीवात्मा होते हुए भगवान का शक्ति है। और ब्रह्मा जी के पास जो भी बनाने की शक्ति दिए गए वो भी भगवान। सब कुछ भगवान है। Brahma ji also is the avatar of the Lord only, na? So that's why they are not different from the Lord in that way. They are guna avatars of the Lord. समझ में आ रहा है? माता जी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्या आप लोग? ठीक है। निमित्त कारण। तीन भी होते हैं, तीन भी होते हैं। तो बहुत काज रहते हैं, मेन ये दो परंपरा से और भी बहुत प्रकार के काज निकाल सकते हैं। शास्त्र में तो बहुत प्रकार के डिस्कशन होते हैं। हमको मुख्य रूप से ये दोनों देखने, अन्वय और इतर। अन्वय माने मेटीरियल कॉज, इतर माने एफिशिएंट कॉज। मटेरियल कॉज इससे चेंज ट्रांसफॉर्मेशन, वो अन्वय के बाद। हाँ, वही अन्वय माने मटेरियल कॉज। ओके। अब ईश्वर, दोनों तो ईश्वर हैं। ईश्वर और लॉर्ड शिवा में और भगवान में क्या अंतर आ गया? लॉर्ड शिवा तो ईश्वर हैं लेकिन वो उपादान कारण नहीं है, माने वो ईशित भी नहीं है, है ना? नेक्स्ट। अच्छा, ऐसा है क्या बात? बढ़िया है। मैंने लॉर्ड शिवा के उद्देश्य है कि आप हमारा जैसे ईश्वर थोड़ी है। आप तो ऐसा ईश्वर है कि ये पूरा जगत ही आप है। इसीलिए आप ही, आप पालने वाले हैं और पालित किया गया भी आप ही है, ऐसा बोलती है। बोल के और भी क्या बोला? किंतु ब्रह्म इंद्रादिवत उपचारादि विश्वेश्वर। तो मैं तो क्या है, मैं छोटा मोटा ये जो ब्रह्मा जी इंद्र जैसा है ना, वैसा मैं भी हूँ। लेकिन आप हमारा जैसे ईश्वर थोड़ी है। आप तो ऐसा ईश्वर है, ये पूरा जगत ही आप, और उस जगत को पालने वाला भी आप। मैं कौन हूं? ऐसा बोले, ये भाव, ये भक्त का, लॉर्ड शिवा की भक्त है ना। तो भगवान इसको सुनने के बाद बोले, अच्छा तो हम क्या जगत हैं?
तो तर्हि मां त्वं प्रधान रूपं ब्रूषे तस्यैव जगदुपादानत्व प्रसिद्धेः जगद्रूपत्वम्। और अच्छा, तो तुम्हें तो ये पूरा मिट्टी है क्या, है ना? तो ये पूरा, मैं तो ये पूरा जड़ पदार्थ हूँ, मैं केवल प्रधान हूँ क्या? ऐसे बोल सकते हैं नहीं? मुझे पता नहीं आप लोगों को समझ में आया या नहीं। कैच कर पा रहे हैं? इस टाइप को थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है क्या? नहीं है ना? ठीक है। तो तर्हि माम त्वं प्रधान स्वरूपम ब्रूषे, क्या शिवा, मैं तो भी ये केवल ये प्रधान हूं क्या, ये जड़ पदार्थ हूं क्या? तब उसके लिए क्या बोले लॉर्ड शिवा? सर्वेषां भावानां वस्तूनां तु आत्मा चेतयिता च। अरे रे रे, ऐसा उद्देश्य नहीं मेरा देव, मेरा उद्देश्य इतना नहीं है। आप तो ये पूरा जगत भी है, उस जगत में रहकर हर एक जीव को चेतना देने वाला भी आप ही है। माने इस पूरा ये एनिमेटेड जो भी है हो रहे हैं, वो सब भी आप ही के कारण हो रहे हैं, है ना? भगवत गीता में क्या बोलते भगवान? भगवान भाई, ये पूरा जगत, ये बहिरंग शक्ति पूरा, ये शक्ति भी मैं हूं, और उसमें रहने वाली जो उससे ऊपर का शक्ति, जो जीवात्मा, वो भी मेरा ही शक्ति है। इसी प्रकार इस जगत को, आप केवल जड़ पदार्थ नहीं है भगवान, आप तो इस जगत में जो चेतना है वो भी आप ही का शक्ति है। सर्वेशा भावानां वस्तुनाम तो आत्मा, और वही नहीं, और उसमें रहकर परमात्मा के रूप में हर एक चीज का, हर एक वस्तु का अस्तित्व का कारण भी आप ही है। हम लोग कहाँ हैं? मैं कौन सा हूं, मैं क्या हूं? ऐसा बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पार्ट फोर। The Supreme Personality of Godhead Vishnu resides within the material worlds as the Sattva Guna Avatara. Lord Shiva is the Tamo Guna Avatara, and Lord Brahma is Rajo Guna Avatara. But although Lord Vishnu is among them, he is not in the same category. माने ये तीनों हैं तो गुणावतार, विष्णु भी गुणावतार है। इसी क्लास में बोला क्या मैं, ये गुणावतारों के बारे में? याद नहीं कौन से क्लास है, रिसेंटली बोले। तो इसमें गुणावतार होते हुए भगवान, तो भगवान में और लॉर्ड शिवा और ब्रह्मा में क्या अंतर है? जस्ट एक मिनट, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे बोर्ड पे। गुणावतार एक ही पुरुष, पुरुष भगवान तीन अवतार लिए हैं। ये तो गर्भोदक से विष्णु को ले लीजिए, इस पुरुष पुरुष अवतार से ही आता है तीनों गुणावतार, है ना? ब्रह्मा विष्णु से किन से आता है? गर्भोदक से विष्णु से नहीं, है ना, आता है। तो ये एक पुरुष इहास्य दत्ते सत्वं रजस्तमो इति प्रकृतेः गुणा तैः युक्तः एकः इह अस्य दत्ते हरिविरिञ्चि हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा। ये एक पुरुष तीनों गुणों से युक्त होकर, क्या है वो, ये सत्वगुण, ये रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुणों से युक्त होकर तीन अवतार ले लिए हैं, तीन नाम प्राप्त किए हैं। इनका नाम है विष्णु, और इनका नाम है ब्रह्मा जी, और इनका नाम है शिव। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं उधर उस लाइन में? ये तीनों विष्णु भी गुण अवतार होते हुए भी ये दोनों की जैसा नहीं है करके बोल रहे हैं। ये दोनों में और विष्णु में क्या अंतर है कि ये जो ब्रह्मा जी का शरीर है ना, ये पूरा रजोगुण से है। माने रजोगुण से वो कौन सा संबंध है उनका? संयुक्त संबंध, संयोग संबंध। रजोगुण से ब्रह्मा जी का कौन सा संबंध? संयोग।
और तमोगुण से ये शिव का कौन सा संबंध? संयोग। माने ब्रह्मा जी माने क्या होता है? एक जीव, विभिन्नांश जीवात्मा माने विभिन्नांश प्लस सो क्रिएटिंग पावर ऑफ द लॉर्ड। सेकेंडरी क्रिएशन क्रिएटिंग पावर। कौन सा क्रिएटिंग पावर? सेकेंडरी क्रिएशन। सो जीवात्मा प्लस सेकेंडरी क्रिएटिंग पावर इज इक्वल टू व्हाट? ब्रह्मा जी। तो ये जो क्रिएटिंग पावर क्या है? इस रजो प्रधान, प्रोमिनेंटली रजोगुण। कौन सा संबंध है इस जीवात्मा को इस शक्ति से? संयोग संबंध है। संयोग संबंध। और शिव भगवान माने क्या है? ईश्वर शक्ति, ईश्वर प्लस डिस्ट्रॉइंग पावर। हाँ, जो भी है देखते ही बस डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा पावर है उनके पास। ये कौन? ये ईश्वर तत्व है। ये स्वांश है क्या? नहीं, ये स्वांश नहीं है। माने ये परब्रह्म नहीं है साक्षात। इस अंश में साक्षात परब्रह्मत्व नहीं है। ये ईश्वर तत्व होते हुए भी साक्षात परब्रह्मत्व नहीं है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सोच रहे हैं माता जी एक्चुअली राज भी। यू लास्ट, यू आर गेटिंग? ईश्वर तत्व होते हुए माने वो विभिन्न अंश भी नहीं है, स्वांश भी नहीं। स्वांश होते तो परब्रह्मत्व साक्षात रहता है उसमें, और विभिन्न अंश में भी परब्रह्मत्व नहीं है। परब्रह्मत्व मीन्स एब्सोल्यूटनेस, supremacy. Parabrahmatva is not there in that directly, but in the swamsh it is there. So but what is this? This part, this chit padartha is what kind of chit padartha it is? It is some special chit padartha. Either neither the it is vibhinamsh nor the swamsh. It is such a Ishvara tattva which can be touched with the maya, which can touch maya, that means which can influence maya. So sorry, Maya can influence that, which can be influenced by Maya. Sorry, which can be influenced by Maya. Such a Ishvara Tattva this is. In the case of Shiva, is only Shiva. You cannot find such a Jiva anywhere, such entity anywhere. Only Shiva case. Usually we say Shiva Tattva. Shiva is Ishvara Tattva. In Madhuri Kadambini, so Vishnu Chakra explains this. सो नेक्स्ट, विष्णु माने क्या है? ये है, ये विष्णु के केस में ये जो रूप है, ये रूप स्वयं पूरा का पूरा रूप है, और प्लस ये सत्वगुण। ये क्या है? मेंटेनिंग पावर। मेंटेनिंग पावर इज इक्वल टू विष्णु। सो हियर ये डिस्ट्रॉइंग पावर प्लस ईश्वर तत्व इज व्हाट काइंड ऑफ संबंध? Sanyog, that means it can touch. Sanyog means this energy, whatever is given to him, that can influence this. Means he can be affected by this power, destroying power. This the power is mainly with what? Tamo pradhana. So okay. So then because of this tamo guna association, this particle, this Ishvara tattva can be influenced actually. Can be, not must be. Can be. If he does devotion, then he cannot be influenced. Like in the case of Jivatma also, if Jivatma does the devotion, then Maya can touch him. No, same way. Okay. And what sambandha they have? So Sanyoga sambandha. Sanyoga. What sambandha in the case of Vishnu? Coming. नो संबंध कैसा? नो संबंध बिना कैसा कंट्रोल करेंगे? संबंध तो रहना ही।
तो ये मेंटेनिंग पावर माने किसमें क्या प्रधान रहता है? सत्व प्रधान, सत्व प्रधान पावर दिस इज। एंड ये इस शक्ति से, सत्व प्रधान शक्ति है, उस शक्ति से विष्णु का क्या संबंध है? कोई गेस कर सकते हैं? सामीप्य, नहीं आगे सामीप्य संबंध। सामीप्य माने दूर से कंट्रोल करती है उसको, वो टच नहीं कर सकती वो, और उनका देह उससे नहीं बना। सामीप्य संबंध। भगवान के जैसे अपने स्वयं रूप बताया है और बाकी सबका रूप माया का ही है। हाँ, माया का ही रूप है। तत्व ठाकुर जो है वो आध्यात्मिक। वो तो तत्व तो आत्मा, जो डॉट्स में रखा वो आध्यात्मिक चित्त है वो, और जो पावर करके लिखा वो मेटीरियल है। उसमें सत्वगुण प्रधान है, एक में रजोगुण प्रधान, उससे उनसे शरीर भी बनता ईश्वर है, ईश्वर है। ईश्वर तत्व, ईश्वर 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 तत्व। अच्छा था स्पेलिंग। ईश्वर तत्व। ये तो चिंतित है ना, स्पिरिचुअल है। ये तो स्पिरिचुअल है, ये तो स्पिरिचुअल है, और लेकिन उनका पावर, उनको बॉडी तो कम हो गया। But when he does, then it is no, we should not see him as a material body, because he is a Vaishnava. All Vaishnavas has to be seen transcendental. But it is generally, then like you know, the Guru Maharaj case also, it's a material, but when he is pure devotee, that's why his body is now transcendental. Like that. Vishnu is, very good. Swamsha. Swamsha, and also is what? Sakshat Parabrahmatvam is there in that. What is that? Sakshat Parabrahmatvam is there. हाँ, स्वाम से इसीलिए कहें परब्रह्मत्व ही उसमें रहता है। साक्षात मैंने डायरेक्ट परब्रह्मत्व, परब्रह्मत्व है उसमें। परब्रह्मत्व माने डायरेक्टली है परब्रह्मत्व। हम लोग भी परब्रह्म है। किस प्रकार से भगवान की शक्ति होते हुए, अभी आप नहीं थे तो ऐसे ये भी, लाइक एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ब्रह्मा जी, ही इज ऑल्सो परब्रह्म। डायरेक्टली परब्रह्म है क्या? नहीं है, लेकिन विभिन्न अंश को भी परब्रह्म बोल सकते हैं। किस दृष्टि से? तो क्योंकि विभिन्न अंश भी भगवान का ही शक्ति है। शक्ति शक्तिमान के बीच में कोई भेद नहीं है, इसीलिए ये भी परब्रह्म करके बोल सकते हैं या नहीं? लेकिन वो डायरेक्टली परब्रह्म है क्या? नहीं, वो क्या है? तो बनाना पड़ा। शक्ति शक्तिमान के बीच में भेद नहीं है करके एक इस प्रिंसिपल के आधार से हम इस शक्ति को भी, इस विभिन्न अंश को भी परब्रह्म बोल रहे हैं। लेकिन विष्णु के केस में वो डायरेक्टली परब्रह्म है, उसको कोई बनाने की कोई जरूरत नहीं, उधर स्वांश है। हाँ, यस प्रभु। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रह्मन, आई एम परब्रह्म। इवन जीवात्मा आल्सो परब्रह्म। इन व्हाट वे? Being the energy of the Lord, and there is no difference between the energy and energetic, then you can say even the Jivatma also Parabrahma. It is indirect way. It's not directly Parabrahma, it is not there. Brahman is Was same. Brahma and Brahman means, in my terminology now, here Brahma means four-handed Brahma, four-headed. not Brahma. Okay. They are also Brahma and Brahman are same. They are also Brahman because Yeah. they are spiritual. Yes. And like that also. Yeah. Okay, Prabhu. I think I will take you, because let the class now. I'll take your questions. Yeah. But Maya cannot touch him. Yes. So that's why Shiva Brahmadi, the names of the Lord Brahma and Vishnu should not be so thing that is independent of the Lord or the equal to the Lord's names. The reason is this.
They cannot be equal. But then that sense, you can say that Sikhi also is part of the Param. Yeah. Okay. Let's move the class then. Yeah. Gradually, this will be clear. So this is the first one line. Prabhupada writes one line, but it is having so many things actually. Because after studying this so many scriptures and so many things, he keeps into the account and he simply said, Lord Shiva is the Tamoguna avatar, Lord Brahma is the Rajoguna avatar, but although Lord Vishnu is among them, he is not in the same category. कैसा सेम नहीं, इसके पीछे इतना है, तो वो तो एक लाइन में लिख दी। इसीलिए प्रभुपाद बुक्स स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ना चाहिए, कोई भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए। अब कैसा इज नॉट द सेम मीन्स कैसे सेम नहीं, आपको प्रश्न आना चाहिए, आप और दूसरा ग्रंथ को देखना चाहिए, और भी प्रभुपाद बोले हैं और अन्य आचार्यों को भी पढ़िए यदि डीप स्टडी करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू रियलिश इन अ बेटर वे। So Prabhupada himself wrote in the first canto, first chapter, in the first sloka itself. So if you want to do a serious study and also deeply, and if you want to get the better enjoyment, relishment, you study the other Acharya's books also. He himself told. He read this statement. Huh? Yes, this statement is there. Under the circumstances, there is no doubt about the authority of Bhagavad. Within the past 500 years, many erudite scholars and acharyas like Jiva Goswami, Sanatana Goswami, Vishwanath Chakravarti, Vallabhacharya, and many other distinguished scholars, even after the time of Lord Chaitanya, made elaborate commentaries on the Bhagavatam. And the serious student would do well to attempt to go through them to better relish the transcendental messages. So that's why he cannot give everything in his purpose, and it will be also become very cumbersome. It's a big and it will become bulk actually. So and also he has the as the given time, because he's the winding up his lila. So he gave the certain things, and he also recommended to study the previous acharyas so commentaries. So if we want to be a serious student, especially Bhakti Vedantis, is must actually. You have to study. Yes. Gopal has also written the name of Vallabhacharya, who is not Parampara. And secondary Subodhi, which he write, he himself said that it is at one time maybe that is much better than Jesus song. So Prabhupada has written the name of Vallabhacharya. How can we get No, he is Acharya, there is no doubt in that. And Prabhupada refers his commentary again and again. If you see the purpose, several points you can see from his commentary also. Not only his writing, but if you see in the future in the slokas purports, his commentaries which are there only in his purport, those are all taken and written by Prabhupada. Yeah. He is not in the same category. Lord Vishnu is Devadeva, the chief of all the demigods. Now you are seeing the now whatever the philosophy we spoke or we heard now through the this is like that, or this is this tattva, like that you can see in the Paramatma Sundarbha when Sujiv Goswami explains Purusha Avataras and the Guna Avataras, there you find the whatever description I gave actually.
This is the Vibhinamsha, and this is the Ishvara Tattva, and this is also Swamsha, Sakshat Parabrahmatva is there. That's why you should worship the Vishnu. And Vishnu's body is not out of the Sattva Guna, because he has the what? Samipya Sambandha. And that material goodness is not going to touch him. And then his Swarupa itself is because of not any modes, it's because of the Vishuddha Sattva. And that's why that form is only the worshipable. So in the Sutta Goswami also says that Sattva Tanoho Sreyamsi Nudamsihu. So Sattva Tanu, that means, which is here Sattva means also should take Vishuddha Sattva. So Vishuddha Sattva Tanu, who is that? That is nothing but Vishnu. Vishnu is worshipable. So like that, we see the philosophical understanding. Now from this Leela, we are seeing directly so the difference between the Shiva and the Vishnu. So what Purana does, so Puranas they give the philosophical explanation, and also there is a Leelas based upon that. So to make us to, so some people who are not able to understand philosophy, at least they should remember this conversation. How we are seeing the difference between the Lord Shiva and Vishnu. So Deva Deva. So that is the beginning. Lord Vishnu is Deva Deva, the chief of all the demigods. Since Lord Shiva is in this material world, the energy of the Supreme Lord, Vishnu includes Lord Shiva. Jagadvyapi said, na? So, because then what is the dialogue from the Lord Vishnu, Bhagavan? So Bhagavan said that you are also Deva Deva. So then what Shiva said? Jagadvyapi. That means you are covering entire universe. In that universe, I am also coming. That means you are my controller also. So this is establishing. That's it. What is, if we consider the names of the Lord Shiva and Brahma are equal to the Lord, then that is offense. So to not to commit such offenses, one should know the tattva. You may think that, hey, what is the need of all this? And why I have to study this? Is simply my headache. You should not think like that. Because you should know the philosophy to not to commit the offenses. So the deep understanding of the proper tattva will make you to alert actually in your devotion. And proper consciousness will be set up with that philosophy. So that you will not commit very strictly, you will not commit the second offense. If you don't have any blurry idea, then so that may lead to consider the Lord Brahma and Shiva also equal to, at least Lord Shiva is equal to the Lord. So Bhagavan, then that may lead to the what? If you don't have clear understanding, then it is very difficult to not to commit offenses. And that's why why we have to study Bhagavatam deeply. Is most of we understood the Srotavya Kirtavyascha स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम सो सुखदेव गोस्वामी बोल दिए हैं तो ये तो करना है तो ठीक है हम तो श्रवण करना है ये लेकिन फिर भी तो हमको क्यों बाकी सब चीजों की क्यों जानना है तो हम चैंटिंग करेंगे बहुत लोग ऐसा बोलते हैं अरे हम तो चैंटिंग करेंगे हमको समझ में आ गया हमको क्यों भागवत पढ़ना है ये सब क्यों पढ़ना है ये सब हेडेक ऐसा बोलते हैं लेकिन अरे तो चैंटिंग तो करना ठीक है लेकिन चैंटिंग करते समय क्या नहीं करना चाहिए तो नहीं पता है आपको तो वो सभी बहुत कुछ ये 10 अपराध से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है 10 अपराध का विचार तो इतना बड़ा है कि पूरा के पूरा शास्त्र को ढंग से समझने बहुत जरूरी है क्योंकि वो 10 अपराध कमिट ना करने के लिए इतना आवश्यकता है यदि आप तो पौधा लगा दिया लेकिन उसको बचाना नहीं आता है तो क्या फायदा वो तो अच्छा ही होता पानी तो डाल रहे हैं वो भी बढ़ रहा है उसके साथ साथ और भी क्या क्या बढ़ रहे हैं आपको आइडिया नहीं तो उसके कुछ दिन के बाद वो क्रॉस कर देगा और आप इधर ही रहे इसीलिए बहुत जरूरी है एक्चुअली और एक एक अपराध का विचार शास्त्र में कई कई फिलॉसफी से कई कई कहानी कई कई फैक्ट से जुड़ा हुआ है एक्चुअली अर्थवाद के आरोप नहीं करना इसका भी बहुत कुछ रहता है इसके विचार तो इसीलिए शास्त्र जितना ढंग से पढ़ेंगे उसके साथ और भी क्या होगा तो भक्ति शुद्ध हो जाती भक्ति का शुद्धता क्या है ये समझ में आता है नहीं तो भक्ति का शुद्धता पता ही नहीं चलेगा जो कुछ भी हम लोग करेंगे सोचते हैं कि हम लोग शुद्ध भक्ति में हैं तो लेकिन हमको प्रॉपरली वेरीफाई करना भी आना चाहिए तो नहीं तो हम क्यों से भक्ति कर रहे हैं किसको पता है किस रास्ते में चल रहा है मैंने भक्ति करते समय तो कर रहे जब कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ कॉन्शियसनेस
में क्या क्या नहीं रहना चाहिए। तो प्योर कॉन्शियसनेस माने क्या होता है, शुद्ध भक्त का कॉन्शियसनेस क्या होता है, ये तो आइडिया रहना चाहिए। इसीलिए तो मैंने इसकी संदर्भ में क्या क्या भक्ति नहीं करना चाहिए, उन भक्तों का क्या कॉन्शियसनेस रहता है। और बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि तो भगवान हमको इधर से ले जाइए और अपना सेवा में रखिए, इधर से ले जाइए, उसके पीछे क्या है, आपका मेटीरियल सफरिंग से मुक्त होने की इच्छा है। तो माने क्या है, आपका अभिलाषा प्यूर है क्या? प्यूर नहीं, उधर कंटामिनेशन हो गया, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं है, तो उधर मोक्ष की इच्छा है वो। तो सबसे बड़ा इच्छा वाला कौन है? तो एक भौतिक पदार्थ के प्रति, जैसे अब गाड़ी घोड़ा चाहने वाला बड़ा इच्छा वाला है, नहीं तो मोक्ष चाहने वाला बड़ा इच्छा वाला है। मोक्ष चाहने वाला बड़ा इच्छा वाला, इच्छा वालों में सबसे बड़ा इच्छा वाला कौन है? मोक्ष चाहने वाला। और आप अभी हमको ये संसार का दुख नहीं चाहिए बोल रहे हैं, माने आप मोक्ष को चाह रहे हैं, माने बड़ा भगवान की सेवा का अतिरिक्त और भी बहुत कुछ बड़ा आप मांग रहे हैं एक्चुअली। आपको एडिया नहीं पता है, तब तो धन्याभिलाष शून्य का अर्थ क्या है, गहरे से अर्थ ही नहीं पता है आपको। तब जीवन भर आप इसी सोच में चलते रहे। इसीलिए तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं, मेरा पर्पस को बहुत अच्छा से एकदम स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़िए आप लोग, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसा बहुत बार बोलते हैं ना। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, बुक्स आर द बेसिस। यस ब्रो। This offense is for devotees only. Who are the other worshipper of Shiva? They are worshipping him. That is not offense to others. Because of ignorance, they are telling Shiva has to be. ओ दे आर ऑलरेडी अग्नोस्टिक्स। नहीं, इसीलिए वो लोग अल्प बुद्धि है। जो भगवान बोलते हैं ना, जो अन्य देवताओं को उपासना करते हैं वो अल्प बुद्धि वाले, और वो सुमेध से नहीं, सुबुद्धि वाले नहीं, वो लोग मंद बुद्धि है। अल्प बुद्धि माने मंद बुद्धि। तो उसको मंद बुद्धि के कारण वो अन्य देवताओं को भी भगवान मान के करते हैं और उधर ही जाते हैं, और उसके बाद उधर से जाकर वापस आना ही पड़ता है। इतना मेहनत करके कोई फायदा नहीं। हरिनाम सुनता हूँ। इसके बारे में जो यस यस, तो वो अच्छा है। ओके, Lord Vishnu is therefore called Jagat Vyapi, the all pervading Lord. Lord Shiva is sometimes called Maheshwar. And so people think that Lord Shiva is everything. But here Lord Shiva addressed Lord Vishnu as Jagadisha, the master of universe. Lord Shiva is sometimes called Vishweshwara, but here he addresses Lord Vishnu as Jaganmay. Actually, Prabhupada also विश्वनाथ का फॉलो कर रहे हैं actually. लेकिन आपको वो सेंस पकड़ना आना चाहिए। ऐसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये तो ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल क्या है, लेकिन उसको थोड़ा सा अंदर महत्व है एक्चुअली। प्रॉपर क्यों लिख रहे हैं, उसको कनेक्ट करके पढ़ते तब आएगा, उसके लिए थोड़ा सा रुक के सोचना पड़ेगा। यदि कमेंट्री पढ़ेंगे तो थोड़ा सा जल्दी क्लिक हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद बोले, इफ यू वांट टू हैव बेटर रिलेशनमेंट एंड यू रीड इट, कितना देंगे एक परपुट में, तो पूरा पूरा चारों आचार्य कमेंट लिखेंगे तो कितना होगा, तो कोई पढ़ेंगे भी नहीं बुक्स तब। सब लोग बोलते हैं क्योंकि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, उन लोगों को एक परपट में सब कुछ चाहिए। ऐसा स्थिति में ये पूरा इतना डिटेलली सब कुछ एनालिसिस करने से भी उसका क्रिटिक डाउन हो जाता है। इसीलिए वो बेसिक स्टेप और एक एक हम लोगों को एक एक स्टेज पे बना के दिया है, और इसके बाद और भी आगे ऐसे चढ़ना है करके आपको दिखाया रास्ता। इसलिए खुद मेहनत भी करना पड़ता है। ये पहले इसको इसको तो अच्छे से जानना चाहिए, उससे आपको हिंट्स मिलता है। अच्छा, इधर ये क्या बोला, इधर ये क्या, एक एक परपुट पढ़ने के लिए कम से कम 1 घंटा 2 घंटा लगता है। क्योंकि कई आचार्यों का अभी तो एक ही आचार्य, लेकिन अभी नेक्स्ट आगे जाएंगे तो कहीं कहीं 3 4 5 आचार्य का इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी ला के इधर रख देते हैं। इतना गहराई विचार रहता है इसके अंदर। तो दिन रात रात भर बैठ के यही एक एक कमेंट्री पढ़ के उसमें कौन सा पॉइंट अच्छा है देख देख के, और उतना लिख दिए। लिखने के लिए उतना मेहनत की, तो पढ़ने के लिए और कितना करना चाहिए। ना मेरा पहले हाँ? उतना तो नहीं होगा। उतना तो नहीं होगा, लेकिन तो कम से कम तो कुछ तो करना ही है।
But here Lord Shiva addresses Lord Vishnu as Jagadisha, the master of universe. Lord Shiva is sometimes called Vishweshwara, but here he addresses Lord Vishnu as Jaganmaya, indicating that even Vishweshwara is under Lord Vishnu's control. So Lord Vishnu is the master of spiritual world, yet he controls the material world also, as stated in Bhagavad Gita. Mayadhyakshena prakriti suyate sacharacharam. Lord Brahma and Lord Shiva are also sometimes called Ishvara. But the supreme Ishvara is Lord Vishnu, Lord Krishna. As stated in Brahma Samhita, Ishvara Param Krishna. The supreme Lord is Krishna, Lord Vishnu. Everything in existence works in proper order because of Lord Vishnu. Andantarastha Paramanu Chayantarastam. Even Paramanu, the small atoms, work because of Lord Vishnu's presence within them. ये सभी लाइन किसके आधार से लिखे हैं? उसमें हम लोग लास्ट पॉइंट क्या डिस्कस किए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री? मैटर बनाना। हाँ, अरे तो भगवान बोले अब तो केवल मैटर है क्या, जस्ट प्रधान है क्या, हम तो जड़ पदार्थ है क्या? तब उसके लिए शिव भगवान क्या बोले हैं? शिव लॉर्ड शिव क्या बोले? सबको चेतना प्रदान। आप तो सबको चेतना प्रदान करते हैं, आप सब में हर एक कण कण में जाकर उसमें चेतना आप ही के कारण है, एग्जिस्टेंस आप ही के कारण है। वो पॉइंट पर लिखे लास्ट 4 लाइन 3। ज्यादा सा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को आप पढ़ेंगे तो काफी माने 50-60% तो कवर हो जाता है प्रभुपाद जी के पर्पस, 50-60 तक जाएगा, लेकिन क्रूशियल पॉइंट्स भी आता है विश्वनाथ जीव गोस्वामी का कमेंट्री से। क्रूशियल पॉइंट्स मैंने जो हमारा गौड़ी वैष्णव का जो बाउंड्रीज है, कौन डिसाइड किए हैं? हमारा बाउंड्री ये है, माने हमारा डिजायर गोल है शुद्ध भक्ति, फॉर दैट शुद्ध भक्ति, सो व्हाट आर द बाउंड्रीज? सो दोस बाउंड्रीज आर डिफाइंड बाय रूप गोस्वामी and elaborated by जीव गोस्वामी and maintained by all other acharyas. इसीलिए बाउंड्रीज क्या है ये जानने के लिए तो ऐसे प्रभात बुक्स में तो रहता है, लेकिन देखना है तभी वो क्लिक होता है। Most of the Chief Goswami commentary is elaborated by Vishnu. ना Blood Roshni is written by Sanatana Goswami, and then Blood Roshni is by Jeev Goswami. Same, Vishnu Thakur also elaborated on oh, it's very different actually. 10th canto if you see, Vaishnav Toshini goes in a different track and Sarartha Deepika goes in a different track, very different actually. And a special rasa Krishna Chavtakur brings up the very new rasa actually, which is not touched by them. And his whole flow goes in a different way actually, in the whole Bhagavatam. Yeah, and he is a lover of Rupa Goswami. Vishwanath Thakur is a full fan actually. Every step and step he glorifies. And he's a Rasik. Rasad. And his presentation is also very Rasik. And we should have Rasak heart actually too. Religious. But Jiva Goswami defines the boundaries, very strict actually. All the philosophical facts, he very strongly in every purpose, in every sloka, he always examines. So what should be carefully taken to our sampada? He will be establishes based upon those points in that sloka. So he establishes our clear philosophy. Yes. He is also Rasik actually. He wrote the Gopal Chub. He is a poet. He is a Kavi. Kavi means until unless if you are not having the Rasa heart, you cannot be Kavi actually. And he is all actually. He is a philosopher. He is a poet and he is a grammarian and he is a great devotee. Everything. Great manager. He is. He's unparalleled actually. He is. Next text number 5. Adyantavasya yanmadyam idamanyadaham bahi yato vyayasya naitani tat tat satyam brahma chidbhavan. Translation. The manifest, the unmanifest, false ego, and the beginning, maintenance, and annihilation.
of this cosmic manifestation all come from you, the Supreme Personality of Godhead. But because you are the absolute truth, the Supreme Absolute Secret Soul, the Supreme Brahman, such changes as birth, death, sustenance do not exist in you. Thank you. Okay, we will continue that commentary. डायलॉग चल रहे हैं अभी. तो क्या बोले लास्ट में? तो भगवान बोले कि आज तो मैं तो जड़ पदार्थ में क्या तो प्रधान है क्या? तब तो शिव जी बोले हैं, लॉर्ड शिवा बोले तो नहीं नहीं नहीं, आप तो केवल जड़ पदार्थ कैसा है, तो आप तो सब में चेतना लाने वाले हैं, तो आप परमात्मा के रूप में सब जगह व्याप्त हैं, इसीलिए सभी चल पा रहे हैं, मूव हो पा रहे हैं और रह पा रहे हैं, तो ऐसा बोल दिए. तब भगवान इसको सुनने के बाद एक बात बोले, क्या बोले? नाम जगतमय उक्त्या जगत उत्पत्त्यादीनि नश्वरत्वेन जाड्यानि च ममापि क्यों. तो आप तो अच्छा है, सो शिव जी आप बहुत बढ़िया बोले हैं, लेकिन आप एक बात बोले मेरे बारे में, मैं तो ये जगत है ना, मैंने जगत का तो उत्पत्ति होती है और उसके बाद उसका कुछ दिन मेंटेन होते हैं, उसके बाद नष्ट भी होते हैं, तो माने इसका अर्थ मैं जगत होती तो मैं भी उत्पन्न होने वाला हूँ, कुछ दिन तक रहने वाला हूँ, उसके बाद मैं भी खत्म हो जाता हूँ क्या? ऐसा प्रश्न पूछे. तब उसको समाधान देते हुए तो भगवान क्या बोले, लॉर्ड शिवा क्या बोले हैं? शिवा बोले कि नहीं नहीं, नो नो नो, आद्यंतौ, आद्यंतौ, ये बात है, आद्यंतवस्य यन्मध्यम इदम अन्यद अहम बहिः. ये है. वो क्या है? वो ब्रह्म है. इसका अर्थ ये है. तो उसको रिप्लाई क्या किए हैं लॉर्ड शिवा? बोले हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा उद्देश्य नहीं मेरा, मेरा उद्देश्य वैसा नहीं है कि आद्यंतो माने आप इस जगत का आरंभ हैं. ये आप इस केवल जगत ही नहीं, जगत का आरंभ भी है और इस जगत का अंत भी है, और इस जगत की जो मध्य माने जो मध्य समय में वो जगत हो मेंटेन हो रहा है, तो वो भी. तो यो आद्यंतो जन्म मृत्यु यच्च मध्यम जीवनम यच्च इदम प्रत्यक्षम वस्तु अन्यत् परोक्षम अहम अहम अहंकारास अहम अहंकारास्पदम बहिर्ममकारास्पदम च वस्तु यथ. यही नहीं, तो आप इसका जगत का आरंभ है, अंत है, और इसके बीच में जो भी वस्तु है माने जो माने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जाता है, जो तो इन द इंटरनल सेंसेस से अनुभव किया जाता है, और वो जो अपना है करके जिन वस्तु को मानते हैं, वो सभी वस्तु, उन सभी वस्तु का आप कारण है, वही आप ब्रह्म है, आप चिद्रूपी हैं, ऐसा बोलते हैं. है ना? आप जगत होते हुए भी इस जगत का आदि अंत और मध्य में रहने वाली सभी वस्तु का, उन सब का भी उद्भव स्थान जो ब्रह्म है, जो चिद्रूपी है, वो है आप, ऐसा बोलते हैं. इसीलिए ब्रह्म है, इसीलिए आपको कोई आदि माने अंत आदि नहीं है. जगत की जैसा आप उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला नहीं है, मेरा उद्देश्य वैसा नहीं है. माने अल्टीमेटली क्या बोले लॉर्ड शिवा? आपका जन्म मृत्यु ऐसा नहीं है जैसे जगत को होता है, लेकिन जगत भी आपके हैं, यही अचिंत्य है. यही शक्ति शक्तिमतो भेदा भेदम. शक्ति और शक्तिमान के बीच में भेद भी है, अभेद भी है. According to the Vedic mantras, yato va imani bhutani jayante, everything is an emanation of the Supreme Personality of God, as stated by the Lord Himself in Bhagavad Gita. भूमिरापनो वायो कम्मनो बुद्धिरेव च अहंकारमित्ययम् इमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. Yes, now today also we finished Bhagavad Gita.
Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and falsive, all Binna Prakriti belong to the Lord. And here what Prabhupada is trying to make us to understand. So he is clarifying to us, Lord is not just Jagat. This Jagat is energy of his energy actually. Is what kind of energy? Binna Prakriti. It's not his Swarupa Sakti. No, it's not Swarupa Sakti. It is Binna Sakti. It's a different. Binna means different from the Swarupa. That is the meaning you should take here. Binna means different from the Swarupa. If it is in the Swarupa, then it is Swarupa Sakti. But if it is Binna from the Lord, Binna Shakti, and also it is Abhinna. Even this Bhautik Jagat, whatever energy is there, this material energy, is being a Shakti of the Lord, and being a Shakti of the Lord, it is different and also it is also non-different, like Swarup Shakti. But only difference is, but still there is one more difference between the Swarup Shakti and this Shakti. This will not give the Swarupa to the Lord. So that's why everywhere you should use Veda and Abheda to fulfill the whatever statements given by the Upanishads and the Shastra. So that's why philosophy is first or the Shastra is first. Philosophy is the first to understand that, Shastra is the first to understand that philosophy is made age. Philosophy, that means, in a nutshell summary, that means, okay, this kind of philosophy if we have, then we can easily understand all the Shastric statements very easily, comfortably, without compromising the any main meaning of that text. So such a way this philosophy is made. And this is a beautiful philosophy than any other philosophies in like Vedanta. Bhakti. So other Vedantas, compared to that, this is the best actually. Achintya Veda Veda philosophy is the best one. Compared to other philosophies like Vishishtadvaitam and Bhedavada, Suddhadvaita and Swabhavika Vedanta. Because the term Achintya, Veda and Abheda, all these three together are going to make all the Shastric statements. So without any compromising of their main meanings, we can directly accept their main meanings and we can easily understand through this philosophy. Otherwise, if you accept only Vishishta Advaitam, then what will happen? So some statements you need to maybe give the secondary meanings for those statements. And if you take purely like Shankaracharya's Advaita philosophy, so Kevala Advaita, that is known as Kevala Advaita. If you take their philosophy, then you have to compromise so much actually, so many statements गला दबाना पड़ेगा सभी वाक्यों का, माने उसका मेन अर्थ को नहीं ले सकते हैं. समझ में आ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? ब्रेक है, ओके ब्रेक. ब्रेक चिंत्य सब भाई नहीं जाएंगे कहीं, कोई नहीं जा रहे. आप तो ब्रेक लिए. Shastra and philosophy. Yes, please. So that means the Shastra is there, the Vedanta and all this things. That has been written by Vyasa. Shastra is eternally there. Compiled. Is compiled. Shastra is Apurusha. Yeah. But to understand the Shastra, Yeah. one has to make some philosophy. Yes. That means that there is a new concept from Shastra. Philosophy is not given in the Shastra. Philosophy is given in the Shastra, but whether we have to find best philosophy so that no statements we are not going to compromise any statements meaning. Compromise means, so instead of taking the main meaning, so taking the secondary meaning, that should not happen. yes, understand. So mean
Who makes this philosophy? Acharya, like Chaitanya Mahaprabhu made for us, Uh-huh. and Ramanuja made for them. Acharya, They give philosophy. they read the scriptures, And they then, understand the scriptures, they grasp the scriptures, yeah, and give the philosophy yes, of yes, exactly. it. है ना? Yes. That's the philosophy. Otherwise, this word achintya, Veda, that nobody will find in the scripture. No, nobody. You cannot find nowhere. But you can establish that through the Bhagavatam slokas. Yeah. But it's not written like this is the Veda defining that kind of direct. And if you go to the Upanishad and Vedas, Yeah. they are also Yeah. there is everything is very indirect. Very indirect actually. So that's Even the Puranas, they are little bit that close to the direct. their speech is there. Yeah. But in the Upanishad, Very indirect actually. very indirect. So that's why they can manipulate such a way and they can divert the whole society into a wrong direction also. What are the intention of the Shastra may not be understood properly, and Acharya may deviate, may make the society to deviate from the truth, like Shankaracharya did. So one may say another thing, something because when Shankaracharya definitely empowered personality, Yeah, Lord he is Shiva, so he came with some service. But in these four main acharyas, there are many other persons. Yeah, out there. Bhaskara and so many. They try to understand according to With their their- own intelligence, Yes, yes. and they come out with a philosophy, just like Atheistic Kapila, Yeah. Kanada, Gautam. There Yeah. are many six philosophies out there. Yeah. They are all asking plus. They also studied the Vedas and they define absolute truth with a minute conception actually. Very limited conception they have. There's six philosophies. That's how six philosophies come. There are Because these six philosophies are also based on scripture. They also read the scripture, analyze the scripture, and they came with their own the thesis. philosophies. Thesis. Like we do the research and we make the thesis, na? Same they made thesis. That is called philosophy. Yeah, thesis. But that is also for evolution for the. That will help us to understand the Vedavas philosophy. Their concepts like Nyaya, their tools, they whatever defined, he defined. So like the Pratyaksha Pramana, Anumana Pramana. So such a concepts will help actually. So that's the Prabhupada, right? One should read all the six philosophy to get the understanding on the Srimad Bhagavatam. How? Because their philosophies will make us, because these philosophies are not existing now. Even of course those are given by these acharyas, those are existing eternally. All vidya, avidya, all the types of knowledges are there eternally. But time to time someone will come and he will make it popular. So these six made this popular, but Bhagavatam is defeating all these six philosophies again and again. So that's why if you don't know their philosophy, you cannot see how Bhagavatam is defeating them. For better relishment and for deep understanding, their philosophy is also needed. And also, not only that, their way of presentation of truth, their tools are useful for us. Their conclusions are not useful, but their tools. Their tools, like Nyaya logic they use. That kind of logical approach, if you adapt and if you try to use that for understanding Bhagavatam, it is useful. Like Sankhya, they define each and every properties of the Sattva properties, Rajaguna properties, Tamaguna properties. If you learn those properties from the Kapila's Sankhya philosophy, that can help you to understand our Kapila. That means so Kardama's Kapila. So his philosophy can be understood very better way. Like all the gunas and how they are interacting. Because whatever the facts you said, that is also right. The tools are right. Definitions are right. But conclusion is wrong. Conclusion is wrong. Conclusion is wrong. Yes. Conclusion is wrong. Yes. Before Chaitanya Mahaprabhu, this Veda philosophy is established by Chaitanya Mahaprabhu. Yes, Chaitanya Mahaprabhu. So before Chaitanya Mahaprabhu, so that philosophy is not available. He summarized all the philosophies and he brought up the final. This philosophy is the best philosophy, which can give the complete idea on the truth. To meet the every Acharya within the philosophy. Yeah, everyone will fit into this philosophy. One more thing, Vyasa, he wrote all the compiled all the scripture. He didn't give any philosophy.
He gave no, that's a Vedanta Sutra, his usual. Sixth philosophy is his own, sixth philosophy. Vedanta Sutra. Ah. But Vedanta Sutra is What was not six? easily comprehensible by anyone. Yeah, that's why Bhagavatam he wrote. Among six philosophies, his philosophy also is there. Vedanta Sutras. So studying Vedanta Sutras also will boost up our deep understanding on the Bhagavad. Out of the six philosophy, one is Vedanta Sutra. Ah. And that is nothing but Bhagavatam. So, But that is not atheistic philosophy. no, even remaining five also not atheistic. They are also based on the Vedas. But they are partial. Not atheistic. एथिस्टिक मीन्स जो वेदों की आधारित नहीं है वो एथिस्टिक है, लेकिन जो भगवान को नहीं मानते तो वो निरीश्वर बोलते हैं, लेकिन अवैदिक नहीं बोल सकते, वो सभी वैदिक है, वैदिक फिलॉसफी. So there are many, out of those six philosophies, few are out of them Nirishwar also. True. Out of those six philosophies, few of them are Nirishwar also. Like Kapila is Nirishwar. And but Nayaka Gautam accepts Ishvara. Ishvara Atma. Though both he accepts. And Kanaka also accepts. Patanjali also Mahapurusha he accepts. In the form of Mahapurusha he accepts the Sanskrit faith. But only mainly Kapila he didn't accept. Remaining. And also our Jaimini didn't accept. He says that the Vishnu is also demigod. Karma Mimamsa. Karma. So Vyasdev gave the philosophy, the Vedanta Sutra and the form of Bhagavata. And Srila Chaitanya Mahaprabhu gave the name, terminology, gave the terminology. Yes. Ching the way the bit stuff. Yeah. So that Vedanta Sutras, the real complete understanding we can easily get through our Achintya Veda. Yeah. But sometimes I see in Bhagavad, I don't remember. Sometimes, so in very rare cases, we also take indirectly. Very rare. Very rare that needed actually. Really needed. So in that case, other Lakshmanika Arthar is, but Shankaracharya takes everywhere he takes it. पूरा की पूरा जो श्रुति बोलना चाहता है, उपनिषद जो बोलना चाहते हैं उसको साइड रख के वो अपना पूरा मनमानी ला के रखते हैं. But in our, you can see, you can understand Bhagavatam, Bhagavad Gita everywhere. Almost direct. Almost. Very few cases. Very few. Prabhupada gives example for that also. I think in some acharyas commented, just like somebody said, and my house is in Ganges. Gangayam Gosha. So it doesn't mean that it's house inside the Ganges. So that's the shore of the Ganges. Like that, this is Lakshmanika. So like that we any sentence if you don't take direct meaning, but if you take the secondary meaning, then that is not Lakshmanika. Like that, our philosophy is such a beautiful philosophy. So it is not making us to take the Lakshmanika of any Vedic statement, any Shruti or any Vedanta Sutras or even our Puranas also. You can take that direct. Yes. And you can understand it through Achintya Veda. Yes. Sometimes that's why devotees jokingly say, we cannot be understood. But that is also true. But it should come from the properly understanding. That we generally use sometimes jokingly. Yeah, joking. Material things also. Okay, we'll start. So we are reading purport of fifth sloka. So I will continue my reading. So in this paragraph here and here, this doesn't mean, however, that because the ingredients come from him, he is no longer complete. पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि भगवान से सब कुछ आ रहा है, मैंने भगवान से कुछ खाली हो जाए. नहीं, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. Because he is the complete whole, even though so many complete units emanate from him, so he remains the complete balance. So many complete units. This pen is also complete unit or not? Is also complete unit. Mobile is also complete unit. That means complete unit means here you should understand that
in this pen, this nib is missing, then you can say it is incomplete. So if it is having the things what it should have, then it is known as complete. It means from the Lord, there are so many complete units are coming out, but still he is complete. But if you take out something from this, can you say it is complete? No. But that means in the material world, so from any object, if you take from this subject, if you take out this top, that means what is that? This cap. So then can you say it's a complete? No. But in the case of the Lord, even if you take out something from him, but still he is complete. What? This is wonderful. This is That is achintya. that is achintya. How it is? Because our material mind always thinks that if you take out something from someone, then how can be it will be complete? It is missing something. But Lord, he says, Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Thus the Lord is called Avyaya, inexhaustible. Unless we accept the absolute truth as Achintya Beda Beda, simultaneously and different, we cannot have clear conception of absolute truth. ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. इसके पीछे इतना विचार है आप बोल नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कैसा बोलेंगे तो अन्य आचार्यों की भी तो एक फिलॉसफी दिए हैं, तो विशिष्ट अद्वैत दिए हैं रामानुजा, और उसके बाद मध्वाचार्य भेदवाद दिए हैं, और वल्लभाचार्य कौन से दिए हैं? शुद्ध अद्वैत दिए हैं, निम्बार्काचार्य स्वाभाविक भेदाभेद. तो ये भी फिलॉसफी से वैष्णवाचार्य दिए हैं, तो ये कंप्लीट नहीं है क्या? तो ये नहीं कंप्लीट. कैसा कंप्लीट नहीं है? एक बहुत बड़ा रिसर्च है ये सभी चार फिलॉसफी क्या है, और हमारा फिलॉसफी कैसा ग्रेड है, और उसमें क्या नहीं है, और इसमें क्या है, और कैसा ग्रेड है. एक बहुत बड़ा, इट विल टेक लॉट ऑफ चर्निंग. So all the other acharyas, they are also talking the Venu. So how it happened that they give a different philosophy which is not correct? I just want to understand. Yeah, because they are seeing the absolute truth at some extent only, not completely. So, and also their explanation, like now we have, so Lord is, everything is inside, and also everything is inside him, and also everything is not inside, is there and not there. That means everything is like this material world is equal to him and also is not equal. If you see in the Ramanujacharya's philosophy, he will explain that Vishishta Advaitam. That means absolute truth is one, and it is having various energies, and he is simply saying that material world is energy. But if we, since we don't have in their philosophy Veda and Abheda, Advaita means Abheda is stressed. Veda is not so much stressed. Stressing is not done. In Advaita, Vishishta Advaitam, in this philosophy, what is more emphasized? Vishishta Advaitam. What is emphasized here? Advaitam. One is the Vishishta means possessing. Oneness is not mentioned, but oneness is defined. Oneness is defined. So that's why, because of this philosophy, you'll understand, you will maximum think that material world is also is energy and this belongs to the Lord. But scrutinizingly, if you want to understand, that means it is different and also non-different, like that Vedic statements are there. Then if you want to understand that, then you should have the philosophy where it is emphasizing both Veda and Abheda. So by their philosophy, we are getting the only rough understanding. With Visishta Advaita, you are getting, Prabhu? That's the point I am asking. Vyasadeva is giving, is compiled all the scriptures. So, But they are not Supreme Lord, na? That's why. But when we say parampara praptam, Yeah. that it means that parampara is missing. Yeah, something lacking. There's no doubt in that. Parampara is broken. Not broken. It's not broken. It's given like that only. It's lacking than this Sampradaya Chaitanya Mahaprabhu's philosophy. When other sampradayas are asking, so that means they are lacking. But it's not wrong. Something lacking is not it doesn't mean that it's wrong. Nothing is wrong in their philosophy. Only lacking is there. Yeah. Shankaracharya's philosophy is wrong actually. Wrong is different. Lacking of some things is different. Like Brahman realization is not wrong, but it is lacking of the realizing the attributes of the absolute truth. Even Paramatma realization is not wrong, but it is lacking in what? Realizing another few more attributes of the absolute truth.
So like that, they are partial, but not complete. What is the complete philosophy? That's what Prabhupada is saying. Achintya Veda Veda, simultaneously one and different. We can't, without this, unless we accept the absolute truth as Achintya Veda Veda, simultaneously one and different, we cannot have a clear conception of absolute truth. Yeah. So we can take this understanding of this way. Yeah. That, for example, Madhvacharya is giving the right, Yes. and He's stressing the Veda so much. He's stressing the Veda too much, and he is not giving the Advait aspect of the Lord. Abheda aspect is not giving much. He is not giving. Stressing is not stressing in his philosophy. On that. So therefore, they are all partial. They cannot relish the Lord fully. Definitely, absolutely. So the way this philosophy will make you to relish the glories of the Lord is unlimited. That's why it is we are very proud of being the followers of Gaudiya Vaishnavism. If we say that they cannot relish the Lord fully, yeah, definitely. So how can we say that those great acharyas are there, the alvas are there, and they had been relishing the Lord, and they had relationship with the Lord also? Yeah, Jiva Goswami says they have some lacking. That is our understanding, because we are targeting the Manjari. That's what is that? Madhuri Rasa, Ujjvala Rasa. So you don't see Ujjvala Rasa in the Vaikuntha. You don't have Madhuri Rasa, and how they can have. And I'm not saying all the Sri Vaishnavas are like that, but mostly they will be expecting the conquering of the Vishnu, so that they have Dasya Rasa. That too in the form of what? In the opulence, not in the sweet way. The way in the Goloka, so the Gopas are his servants, how they serve. So that rasa is very sweet rasa. That is not there. So in this way, the way of the relishment, you can see how much the Gaudiya Vaishnavas are relishing, how much other sampradayas are relishing. In case of Anda, we can see that there is a Madhurya or conjugal relation. That's why I'm saying, I'm not saying all the Sri Vaishnavas, but the primarily I'm saying that's right. Some acharyas are there also who are relishing it. How they did? Like we say in case of he writes Tirupalani. This is Vatsalya, I can understand. But not Madhurya. Madhurya is the highest. That is also Vipralam. And that is the Rupa Goswami is the great personality who opened the great treasury for all of us. Which is very secret of all the secrets is the Golok Buddha. It's not so easy to getting that. And then that doors are opened and all the treasure is taken out and given in the form of nectar of devotion and also in the form of Ujjal Nilamani and Lag Bhagavatamritam. Great books he wrote and he opened the full treasury for take it. And otherwise, how a Jivatma can come to know these secrets? Even great acharyas came, but they didn't open this. But Chaitanya Mahaprabhu came and he opened. Lord himself opened. So that's why this sampradaya is unique, is special, and is complete, and is highest, and is ultimate. So the Lord is the root of everything. Aham Adir Hi Devanam. He is the original cause of all the devas and demigods. Aham Sarvasya Prabhavaha. Prabhupada is giving several quotations. So Aham Sarvasya Prabhavaha Mattah Sarvam Pravarti. Everything emanates from me. In all cases, nominative, objective, positive, negative, and so on. Whatever we may conceive of this entire cosmic manifestation is in fact the supreme law. For him, there are no such distinctions as this is mine and this belongs to someone else, because he is everything. ऐसा एक वस्तु देखा सकते हैं कि आप इस दुनिया में जो भगवान का नहीं देख सकते हैं। तो ये चैलेंज है किसी के लिए। तो एक वस्तु दिखाइए जो भगवान का नहीं। एक एटम भी नहीं, कम से कम एक एटम तो हम लोग फाइंड आउट कर दिए जाए जिस पर भगवान की कब्जा नहीं है।
6th श्लोक. Nominative cases, not cases nominative. That means all the nominative case, that nouns. Yeah. All names. Names. Yeah. Objective means Pradama Vibhakti, Ditya Vibhakti, all. That means all the Vibhaktis. That means all the Vibhaktis which are indicating, that means Karta, Karma, Karanam, and Sampradhanam, Apadhanam, Sambandha, Adhikarana, everything is Lord only. It's nominative. No, nominative is first one. Yeah. Nominative case, first one, subject. तैवाचरणाम्बोजम् श्रेयस्कामानिराशिषः विसृज्यो भयतः संगम् मुनयः समुपासते. Pure devotees or great sensitive persons who desire to achieve the highest goal in life and who are completely free from all material desires, perfect dedication, engage constantly in the transcendental service of your Lord. हाँ, तो अभी कमेंट्री में जाएंगे. तो अभी तक क्या हुआ याद है? Bhagwan, Lord Shiva said that you are Adi, Anta and हाँ, तो भगवान उसके ऊपर क्या आक्षेप किए हैं जो शिव बोले हैं, शिव जी बोले हैं, अरे अब तो हम तो प्रधान बोलेंगे तो हमारा भी आदि अंत है क्या, मैं भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाऊंगा क्या? तब उसके लिए उत्तर में तो शिव जी क्या बोले हैं, नहीं नहीं नहीं, आपका आदि अंत नहीं है और आप आदि भी हैं अंत भी हैं. किसका? ये पूरा जगत का. और इस जगत में जो भी हम लोग अनुभव करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष इंद्रियों से और इनर इंद्रियों मन से नहीं तो अहंकार से, जो भी ना मेरा है करके जितना भी हम लोग क्लेम करते हैं वो सब कुछ आपसे ही आने वाला है और वही ब्रह्म है और आप चिद रूपी है, ऐसा बोल दिए. तो पिछले श्लोक में अभी उसके बाद और भी जोड़ा जा रहा है इस श्लोक में. तव एवं भूतत्वे महताम आचार एव प्रमाणम इत्याह. तो इसमें और भी जोड़ रहे हैं एक्चुअली, इसमें कोई भी भगवान का आक्षेप कुछ नहीं है. तो शिव जी ही, लॉर्ड शिवा इज एडिंग समथिंग मोर. तो भगवान आप और भी क्या है ना पता है, आप इतना है, माने सबका कारण आप ही हैं, होते हुए भी आपका जो व्यवहार है वो बहुत महान व्यवहार है, बहुत बढ़िया व्यवहार रखते हैं आप. महताम आचार, माने आपका जो बिहेवियर है वो बहुत महान है. क्या है वो? तो एवं भूतत्व माने आपका जो व्यवहार है वही प्रमाण है कि आप महान हैं और आप साधारण नहीं है. कैसा, क्या है वो? तो एवं भूतत्व, इस प्रकार आप हैं करके बोलने के लिए क्या प्रमाण है? आपका जो व्यवहार है यही प्रमाण है. क्या है वो व्यवहार? तो तब ये ऐसा व्यवहार आप ही के पास है, मेरा पास तो नहीं है, ऐसा बोले लॉर्ड शिवा. क्या है वो? मम, क्या है वो? मम तु सकाम एवा इति भावः. मैं तो ईश्वर हूं, लेकिन कौन से ईश्वर हूं? तो मैं सकाम ईश्वर हूं, लेकिन आप ऐसा नहीं है. श्रेयस काम भक्ति च उभयत्र इह अमुद्रा च यथा तद भक्ता निराशीष त्वमपि निराशीर. माने आप सबको पालन करते हैं, हम भी ईश्वर हैं लेकिन आप ईश्वर हैं, लेकिन आपका ईश्वर तो कैसा है? आप किस प्रकार के ईश्वर हैं? आप में ईश्वरत्व तो किस प्रकार का है? आपका ईश्वरत्व ऐसा है कि आप कुछ भी नहीं चाहते, इतना पालन करके आप कुछ भी नहीं चाहते, निराशी ही. लेकिन हम लोगों सकाम, कुछ कुछ पालन करेंगे तो कुछ कंट्रोल करेंगे तो उससे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आप वैसा नहीं, निराशीष ही. जैसे आपका भक्त निराशीष है, आपका भक्तों का भी कोई, माने कोई धन चाहिए क्या, कोई पद चाहिए क्या, कोई स्त्री चाहिए क्या, कोई प्रतिष्ठा चाहिए क्या, कुछ नहीं चाहिए. आपका भक्त जैसा कुछ भी नहीं चाहते हैं, निराशी हैं. और वैसा तो
आप और आपका भक्त वैसे ये कुछ भी नहीं चाहने वाला है। तो इसीलिए निराशी न तो अस्मदाद इवा ऐश्वर्य कामनया सेवा का सापेक्षा। हम लोग सभी ऐश्वर्य चाहते हैं, लॉर्ड शिवा क्या बोल रहे हैं, तो हम सभी कंट्रोल पोजीशन चाहने वाले हैं, लेकिन आप कंट्रोल करते हैं लेकिन कोई अपेक्षा नहीं उसके पीछे, ये पोस्ट चाहिए ऐसा भाव आपके प्रति एकदम रहते नहीं। जैसा आपके भक्त ये हैं वैसा आप भी हैं, ऐसा बोल दिए। Pure devotees are greatly saintly persons who desire to achieve the highest goal in life and who are completely free from all material desires for sense gratification, engage constantly in the transcendental service of your lotus feet. इस श्लोक में एक्चुअली भक्तों के बारे में बोला गया है, लेकिन इसको कॉन्टेक्स्ट में कैसा बनाया है विश्वनाथ जी, तो आपका भक्तों जैसा कुछ नहीं चाहते हैं आप भी। इसे अचानक क्यों बोले लेकिन ये जो, क्योंकि आप आपके भक्त जैसा कुछ नहीं चाहते, आप भी वैसा है, और आप इतना बड़ा पद लेके कुछ करते हैं लेकिन फिर भी उससे आपको कोई तो मजा लेने कुछ है क्या, उनका एंजॉयमेंट का कुछ है क्या, उसमें कुछ भी नहीं। Purport. One is in the material world who thinks I am this body and everything with reference to my body is mine. Ato graha kshetras sutapta vittayjanasya mohoyam aham mamiti. This is the symptom of material life. मैंने ब्रह्म इसे बोला, लॉर्ड शिवा actually the pure devotee, and that's why he is also not having the any kind of the desires. But in general, if Lord Shiva is not a devotee, if we take, because he is also, he can be touched by the material desires, so he can have the, he may get the proud of his position, chances are there. But in the case of the Lord Vishnu, no chance, is completely, he is different from the all other Ishwaras. He is such a Ishvara, he never get any kind of attachment or any kind of so expectation or any kind of so-called enjoyment through that post and position. No. But those who are Manayaha, saintly persons, following in the footsteps of Narada Muni, simply engage in transcendental loving service of the Lord without any personal desire for sense gratification. So, Anyabhilasha Sunyam Jnana Karmadhyanavrtam. Either in this life or in the next life, the only concern of such saintly devotees is to serve the Supreme Personality of God. Only the service. Now, purpose of service also is pleasing Lord only. No other purpose. Not to come out from this material world or not to come out from this material anxieties. No. Or not to achieve the spiritual planet. No. These are all comes under the mukti. Thus, they are also absolute because they have no other desires. That's why they are also absolute. If you have desire means you are not absolute. Being freed from the dualities of material desire, they are all called Shreyas Kama. In other words, they are not concerned with dharma, artha, kama, moksha. All this, they don't concern for this. The only concern for such devotees is moksha, liberation. This moksha doesn't refer to, moksha means what here? So that means dharma, artha, kama, moksha. That means apavarga. Apavarga means you should take pure devotion. This is in the fifth canto. In certain place it is said apavarga means devotion. Our acharyas gives dharmasya hyapavargasya. इसमें धर्म अपवर्ग के लिए करना चाहिए ऐसा कहा गया। उधर अपवर्ग माने क्या है, भक्ति है करके हमारा आचार्य एस्टैब्लिश करते हैं। अपवर्ग माने भक्ति माने परफेक्टली पवर्ग से बाहर जाने के लिए बेस्ट क्या है, मोक्ष है, नहीं तो भक्ति है। भक्ति इसीलिए अपवर्ग माने तो पवर्ग से दूर करने वाला यही अपवर्ग है। वो कौन है, वो भक्ति है। इसीलिए अपवर्ग से क्या लेना चाहिए, भक्ति लेना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे थे, अपवर्ग माने भक्ति माने। सो ये जो मायावादी फिलोसफर्स जो मोक्ष लेते हैं ना, वो मोक्ष नहीं है, वो मोक्ष नहीं। चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन दैट रियल मोक्ष मींस टेकिंग शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ये रियल मोक्ष है, ये रियल अपवर्ग है।
But in contextually, some places you should take ननाक पृष्ठम न पारमेष्टम, ऐसा श्लोकों में आप वर्ग से उसमें क्या लेना चाहिए, आप वर्ग घंटे लिबरेशन लेंगे, तो उस कॉन्टेक्सचुअली लेना. बट इन जनरली तो मेन मीनिंग इज आचार्यस गिव इससे भक्ति, टेकिंग शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड. The Lord clearly explained this fact while instructing Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya wanted to correct the word Mukti Pade in Srimad Bhagavatam, but Chaitanya Mahaprabhu informed him that there is no need to correct any word in Srimad Bhagavatam. Because, yeah. So he explained that Mukti Pade refers to the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Because, so Bhakti, taking shelter at the lotus feet of the Lord includes Muktiyas. Because if someone is taking shelter at the lotus feet of the Lord, means he's already liberated from the three modes. That means, so Apavarga or the moksha is included in that. In what? In taking shelter at the lotus feet of the Lord. A pure devotee is not concerned with the material things. He is not concerned with the religiosity, economic development, or sense gratification. No. Or these karmi, you'll do hard work, earn money, and enjoy. और कैसा पैसा कमाया जाए, और से कैसा अलग अलग नया नया खरीदेंगे उस पैसा से, और उसके बाद उससे कैसा एंजॉयमेंट किया जाए, और उसके बाद और भी नया तरीका से कैसा कमाया जाए. ये है religiosity, economic development and sense gratification. त्वं ब्रह्म पूर्णममृतं विगुणं no, this is not the त्वं ब्रह्म पूर्णममृतं विगुणं विशोकम् आनन्दमात्रम् अविकारमनन्यदन्यत्. विश्वस्य हेतुर्उदयस्थिति संयमानम् आत्मेश्वरश्च तदपेक्षितयानपेक्षः. You are the supreme human, complete in everything. Being completely spiritual, you are eternal, free from the material modes of nature, and full of transcendental bliss. Indeed, for you, there is no question of limitation. Since you are the supreme cause, the cause of all causes, nothing can exist without you. Yet, we are different from you, the relationship of cause and effect. For in one sense, the cause and effect are different. You are the original cause of creation, manifestation, and annihilation, and you bestow benedictions upon all living entities. Everyone depends upon you for the results of his activities, but you are always independent. Thank you. और आगे बात कैसे बढ़ गया देखते हैं. तो इसकी पहले क्या बोले, हे भगवान आप तो पोस्ट पद लेते हैं, ईश्वर तो है, लेकिन कोई एक्सपेक्टेशन नहीं आपके जैसा. आपके भक्त के पास कोई व्यक्त जैसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वैसा आप भी हैं. आप तो ऐसा इतना ग्रेट महान गुण है आपने, एक ग्रेट एक स्वभाव है, आचार महताम आचार है. आपका जो बिहेवियर है वो महताम है, इतना ग्रेट है. तो ऐसा बोलने के बाद यतः त्वं विश्वस्माद् विलक्षण स्वरूप, तो इसीलिए आप हम सबसे ईश्वर हुए हैं, लेकिन हम सभी ईश्वरों से आप एकदम बहुत अलग ही तरीका का ईश्वर है. विलक्षण स्वरूप माने आपका स्वरूप बहुत अलग है. जैसे ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, ये सभी तो ईश्वर हैं, हम सब तो ईश्वर हैं, लेकिन आप हम लोग का जैसे तो नहीं. आप तो एकदम स्पेशल है. वो स्पेशलिटी क्या है? ब्रह्मम ब्रह्म त्वमिति ब्रह्म चिन्मयम विश्वम त्वचित
त्वचित एवं पूर्णम इत्यादि विशेषणैः विश्वम अपूर्णम स्मृतिकम सगुणम सशोकम सुख दुःखात्मकम सविकार तथा न विद्यते अन्यत् यतः तद ब्रह्म अनन्यत् सर्वकारणत्व विश्वम तु अन्यत् चिद्भिन्नत्वात् तथा ब्रह्म अन्यत् माया जड़ विश्व भिन्नत्वात् विश्वम तु अन्यत्। तो इसमें आप बहुत विलक्षण है, विलक्षण स्वरूप है। क्या है वो विलक्षण स्वरूप? आप ब्रह्म है, माने आप चिन्मय हैं। आप जगत की जैसा नहीं है। जगत कैसा है? समृतिकम, माने उसका मृत्यु होता है, माने नष्ट हो जाती है, और वो गुणों से युक्त हैं और शोक से युक्त हैं और सुख दुखों से बना हुआ है, सुख दुखात्मक है, विकार वाली है। लेकिन आपका जो स्वरूप है एकदम विलक्षण है इनसे। माने आपका स्वरूप कभी भी उसका मृत्यु नहीं होता है, मगर आप गुणों से अतीत हैं, आप में कोई शोक नहीं होता है, आप पूरा सुख दुखों से अलग ही हैं, आप में कोई विकार नहीं है, और वही आप एकदम अनन्य, माने आप जैसा और कोई है ही नहीं, आप ऐसा है। तो बाकी इंद्र चंद्र सब, शिवा और ब्रह्मा, ये सभी भी, उन सबका जो भी है देह चिन्मय नहीं है, लेकिन भगवान की देह चिन्मय है, विकार रहित है, गुणों से मुक्त है और शोक से रहित है। ऐसा स्वरूप है भगवान का। इसलिए भगवान के स्वरूप विलक्षण स्वरूप, लेकिन बाकी का स्वरूप वैसा है। ब्रह्मा की स्वरूप और शिव की स्वरूप, वो एक का रजोमय और एक का तमोमय। हाँ। और भी क्या बोलते हैं, आप ये समस्त जगत को उत्पन्न तो किए हैं, इस समस्त जगत का कारण है, जीवों का भी कारण आप ही हैं, और उनका ईश्वर भी आप ही हैं, और उसको फल देने वाला भी आप ही हैं। लेकिन आप जीवों को पालन करते हैं और उसको फल जो चाहिए वो भी देते हैं। नहीं, आप तो पालन करते हैं, लेकिन ऐसा पालक नहीं है जैसा राजा है। एक राजा में एक भगवान में क्या अंतर है? कुछ गैस करके बोलिए, कुछ डिफरेंसेस। राजा भी एक ईश्वर तो है, लेकिन इधर विश्वनाथ ठाकुर बोल रहे हैं तो ये भगवान तो ईश्वर तो है, जैसे राजा ईश्वर है ना, कंट्रोल करते हैं या नहीं? राजा भी एक कंट्रोलर है, तो भगवान भी एक कंट्रोलर है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? राजा टैक्स लेता है। राजा के केस में क्या है? राजाधिवत कयापि अपेक्षया सेवकेभ्यः फलम न दत्। राजा भी फल देते हैं, राजा कंट्रोल करते हैं, फल देते हैं, गिफ्ट देते हैं या नहीं? नहीं तो कुछ रिजल्ट्स देते रहते हैं अपना लोगों को। तो क्या है राजा की केस में? क्या है? राजा सेवकेभ्यः फलम ददामि, माने कया अपेक्षया। सो कुछ अपेक्षा कर कर, कुछ अपेक्षा रखकर सेवक से ये सब काम करते हैं, कंट्रोल करना, पालन करना, फल देना। ये क्या है? वही टैक्स और रेस्पेक्ट, ये सभी एक्सपेक्ट करते हैं। बिना टैक्स के राजा काम करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन भगवान कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, फिर भी सबको पालन कर रहे हैं, और सबको परमात्मा के रूप में हृदय में बैठ के वो लोग जो जो कर्म करेंगे उसका फल को अरेंज कर रहे हैं। और उनको कुछ आ रहा है क्या? उनको उससे कुछ एक्सपेक्टेशन क्या? क्या उनसे कुछ दे रहे हैं क्या जीवात्मा टैक्स? कुछ नहीं, फ्रीली कर रहे हैं सेवा, फ्री 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 सर्विस। लेकिन राजा टैक्स लेके सर्विस करते हैं। तो ये आप इस प्रकार की ईश्वर है। हम लोगों तो देवताओं कैसे हैं? वो लोग भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं है ना? देवताओं के यहाँ कुछ हविष एक्सपेक्ट करते हैं, तब उसको जाकर रिटर्न में देते हैं। भगवान, प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि उनको दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली यथा मुखस्य प्रतिमुखम। दैट मीन्स उधर प्रहलाद महाराज बोलते हैं उनको देने से एक्चुअली वो अपने आप को ही दे रहे हैं। जैसे आपको अपना आईना में अपना जो भी छाया पर प्रतिबिंब है उसको सजाना चाहते तो आपको क्या करना चाहिए?
इस प्रतिबिंब को सजाने से इधर 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 बिंदी लगा के इधर ज्वेलरी लगाएंगे तो वो अच्छा दिखेगी क्या? कहाँ लगाना चाहिए? तो बिंब में लगाने, प्रतिबिंब में लगाने से कुछ नहीं होता है ना। जैसे जीवात्मा प्रतिबिंब है और भगवान बिंब है। तो यदि प्रतिबिंब को सजाना चाहते हैं तो उसके लिए सजाव कहाँ रखना चाहिए, कहाँ करना चाहिए? प्रतिबिंब में करना है तो बिंब में करना है? बिंब में करना है। इसलिए जीवात्मा खुश रहना चाहते तो वो कहाँ से करना है? वो उसको अपने आप को करना है, नहीं तो भगवान बिंब को करना है। बिंब स्थानी भगवान को करना चाहिए। इसीलिए वो उधर प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हे भगवान, ऐसा लगता है कि हम लोग आपको कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो देने से हमारा ही भलाई होता है, आपको उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, उससे हमारा ही भलाई हो रहा है। तो इसीलिए आप लोग कभी कभी सोचते हैं कि भगवान को तो हम दे रहे हैं, लेकिन उससे किसका भलाई हो रहा है? भगवान को कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं, हम लोगों को ही हो रहा है। तो इसीलिए तो ऐसा राजा एक टैक्स एक्सपेक्ट करके पालन और फल देते हैं, लेकिन भगवान वैसा नहीं है। आप कुछ भी एक्सपेक्ट ना करके सेवा करते हैं, यानी ये कंट्रोल करते हैं, फल देते हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया इस श्लोक में? अनपेक्ष, अनपेक्ष तद अपेक्षितया अनपेक्ष, अनपेक्ष कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, ऑलवेज फुल्ली इंडिपेंडेंट। ऐसा राजा को ये सभी लोग टैक्स नहीं देंगे तो राजा उस गद्दी पर बैठ सकते हैं, ट्रेजरी बनेगा, कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ नहीं, वो पूरा आश्रित है लोगों के। लेकिन ये राजा ऐसा नहीं, उनका कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल करते हैं और फल देते हैं। ये ऐसा राजा है, ये ऐसा कंट्रोलर है। और इनको यदि कोई लोग कुछ देते तो भी वो उनके लिए नहीं जाती, वो उल्टा हमको ही आके हमारा भलाई के लिए बन जाती। The Supreme Personality of Godhead says in Bhagavad Gita, Maya tatam idam sarvam jagadavyakta murtina masthani sarvabhutani nacha aham tesh अवस्थितः। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं? कोई मेरा में नहीं है बोलते, दिस इज माय ऐश्वर्या है ना। इधर क्या बोला? मस्तानी सर्वभूतानि, मैंने समस्त भूत मेरे में है बोले। उसका नेक्स्ट श्लोक, मत्स्यस्थानि भूतानि न च मस्तानि भूत, मैंने कोई मेरे में, कोई भूत मेरे में नहीं है। दोनों उल्टा वाक्य है, एकदम सीधा सीधा उल्टा। ये कैसा? सभी प्राणी भगवान में है और भगवान में नहीं भी है। ये क्या भगवान झूठ बोल रहे हैं क्या? ये योग वैश्य, ये ऐश्वर्य माने अचिंत्य है, यही भगवान का सुप्रीमेसी है। अरे जो कोई समझ नहीं पाते हैं उसको उसको प्रोसेस करना, उसको रखना, वही ग्रेट है ना। जिसके पास, किसी के पास नहीं है, जिसके पास रहेगा वही भगवान होते हैं। जो संभव भी नहीं होते हैं लेकिन जिससे संभव होता है वही भगवान। इससे भगवान का महत्व तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अल्प बुद्धि वाले क्या सोचते हैं? अरे ये कॉन्सेप्ट तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये तो पुस्तक कोई लिखा हो सकता है, ये सब क्या है, पागल पागल जैसे लग रहे हैं, तो चलो हम छोड़ दें करके वो ऐसे माया की गोद में जाके उधर सो जाएगा। तो क्या माया पूरा अच्छे से पीट पीट के बार बार पीट पीट के तो इसीलिए ये अचिंत्य है, ये योगमेश्वरम। By me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in. And he says, I am not in, he says, and next, I am also there in everyone. He is there in everyone, he is not there, everything is there in him, and everything is not in him. All four statements are right, which are all contradictory. That is Yoga Vaishnavam. Some people face these sources. What is the use of the contradictory statement by the Lord? Otherwise, Lord was everything contradictory and paroksha indirectly. This is so aparoksha mama priya. Paroksha mama priya actually. Paroksha, all contradictory, and paroksha, he likes. And he is also like that.
He has everything. All the features are there in him. All contradictory qualities are there. All best qualities are there. Everything is there in him. And very extraordinary he is. You cannot imagine also such extraordinary he is. This explains the philosophy of simultaneously oneness and difference, known as Achintya Bheda Veda. So Prabhupada is, yeah. Because since these Vakyas are there, so everything is there in him and also not there, then how to understand? We cannot understand. That's why it's Achintya. That's our philosophy. Adopted the name Achintya. So that's why philosophy is derived based upon the Vedic statements or based upon the Puranas and Shastra. Based upon Shastra, philosophy is designed. It's not that the philosophy first wrote and then Shastra came later. No. Like grammar came first or the language first? Language first. So to make that language, to purify that language, grammar is discovered. Similarly, so already the truth is there. Krishna, Shastra is describing the truth. Truth is eternally existing. And the Shastra is describing that. Those are there for eternally from the immemorial, from the beginningless, from Anadi they are there. So to make us to understand, then philosophy made this. So Lord, everything is there in him and everything is not there. So that's why you should take the word Achintya. So then if initially itself said to you, hey, our philosophy is Achintya, so these statements are Achintya, so you should accept it directly. Based upon our philosophy. Gone. Otherwise, अरे ऐसा कैसे ऐसा कैसे ऐसा कैसे करके सोचते सोचते उधर टाइम वेस्ट करिए. Ishwarah Paramah Krishna Satchidananda Vigraha. The Lord is the supreme cause, and his form has nothing to do with the material modes of nature. The devotee prays, as your devotee is completely free from all desires, your Lordship is also completely free from all desires. You are fully independent. All living entities engage in your service. You don't depend on the service of anyone, like Prahlad Maharaj is saying. So if you do service, that is decorating the giver only. Giver only is going to get a benefit. Although this material world is created completely by you, everything depends upon your sanction. As stated in the Bhagavad Gita, Matta Smriti Gnanam Apohanam Cha. Remembrance, knowledge, and forgetfulness comes from you. Nothing can be done independently. कोई भी ऐसा है क्या भगवान की आश्रित ना रहकर कुछ कर सकते? कोई कुछ नहीं कर सकते. सब कुछ भगवान से ही दिया जा रहा है. तो इसीलिए माइन्यूटली वी आर नेग्लिजिबली इंडिपेंडेंट. नेग्लिजिबली almost all very minute. So nothing can be done independently. You act independently for the service rendered by your servants. The living entities depend on mercy for liberation, but when you want to give them liberation, you don't depend on anyone else. Indeed, by your causeless mercy, you can give liberation to anyone. Those who receive your mercy are called Kripasanta. To reach the platform of perfection takes many lives. Bahunam Janmanam. Nonetheless, even without undergoing severe austerities, one can attain perfection by your mercy. So devotional service should be unmotivated and free from the impediments. Ahaituki apratihata e atma suprasidati. This is the position of Nirashish, or freed from expectations for results. A pure devotee continuously offers transcendental loving service to you, but you may nonetheless offer mercy to anyone without depending on his service. प्रभुपाद एकदम एक अलग स्टाइल में चले गए. क्या बोल रहे हैं कि इधर, तो इसकी पहले हम लोग देखे हैं ना पिछले श्लोक में प्रभुपाद क्या बोलते हैं. उसमें श्लोक में क्या बोला है शिव जी, तो भक्तों श्रेयस काम, माने उन लोगों को कोई डिजायर नहीं. तो ऐसा ही भगवान भी इतना ईश्वर होते भी उनको कोई अपेक्षा नहीं, कोई डिजायर नहीं. वो बोलने के बाद अभी इस श्लोक में क्या बोला जा रहा है, तो भगवान इसमें अनपेक्ष. सो माने उनको कोई अपेक्षा नहीं, जैसा बाकी राजाओं की जैसा अपेक्षा है वैसा कुछ अपेक्षा नहीं है. माने पूरा इंडिपेंडेंट है. तो लॉर्ड माने, लेकिन ये राजा वो भी ईश्वर है, वो भी फल देते हैं, लेकिन कैसा है
उन लोग प्रजाओं से टैक्स लेकर तब वो पूरा अधिकार चलाता रहता है। लेकिन भगवान किसी से कुछ भी ना लेकर पूरा की पूरा वो कंट्रोलिंग काम करते हैं और फल भी देते हैं। तो ये पॉइंट मेन है। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, तो भगवान इंडिपेंडेंट है और वो पॉइंट भक्ति में लेके आए हैं। तो भक्ति में ले आके तो क्या बोलते हैं, भक्त भी सो पूरा के पूरा सो इंडिपेंडेंट, and they are also not dependent on anything. That means their devotion is not out of the motivation. So it's completely devotional service should be unmotivated and free from the impediments. This is the position of nirashisha, are freed from the expectation for results. A pure devotee continuously offers translated loving service to you, but may nonetheless offer mercy to anyone. So without depending on his service, you may nonetheless have. Mane, in the case of the Lord, Lord gives the mercy independently. And also, devotees also can give the mercy independently. So this independent word anapeksha means independence. इसकी आधार से प्रभुपाद जी क्या एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो विदाउट डिपेंडिंग ऑन हिज सर्विस लॉर्ड कैन गिव द mercy विदाउट एनी सो एक्सपेक्टेशन। mercy का पॉइंट लेके आए इधर प्रभुपाद जी। तो mercy ऐसा देते हैं कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, mercy दे देते हैं। उसमें उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं एक्चुअली, विश्वनाथ जी का कमेंट्री में हम लोग ये पढ़े हैं कि भगवान कोई एक्सपेक्ट ना करके पालन करते हैं और फल देते हैं। और प्रभुपाद जी उसी को बेस में कर क्या बोल रहे, भगवान कृपा भी देते हैं बिना एक्सपेक्ट करके। ये है भगवान, वैसा भक्त भी देते हैं बिना कोई कंडीशंस ना देख के, बिना देख के कंडीशंस भक्त भी दे देते हैं। इसलिए मेर्सी है वो, मेर्सी माने बिना कंडीशंस का देने वाला। एकस्त्वमेव सदस, एकस्त्वमेव सदसद्वयमद्वयं च स्वर्णं कृताकृतमिवेह न वस्तु भेदः अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विमो विहितो विकल्पो यस्मात् गुणव्यतिकरो निरुपाधिकस्य। Yes. Your Lordship alone is the cause and the effect. Therefore, although you appear to be two, you are the absolute one, as there is no difference between the gold of the golden ornaments and the gold in wine. There is no difference between cause and effect. Both of them are the same. Only because of ignorance do people concoct difference and dualities. You are free from material contamination, for instance, the entire cosmos is caused by you and cannot exist without you. It is an effect of your transcendental qualities. Thus, the conception that Brahman is true and the world fall cannot be maintained. Thank you. What else? So Lord Shiva himself, he is glorifying even further. He is saying what? Further he is glorifying Lord. जीवानां त्वदीया तटस्थ शक्ति कार्यत्वात् तद उपादेः विश्वस्य त्वदीया माया शक्ति कार्यत्वात् इदं चिच्चडात्म जगत् त्वमेव। तो पूरा जगत भगवान ही है। क्यों? क्योंकि जो जीवात्मा है वो तटस्थ शक्ति का कार्य है ना। जीवात्मा कहाँ से बना, कहाँ बना माने इधर कहाँ से प्रकट हुआ, तो तटस्थ शक्ति से। मन तटस्थ शक्ति का कार्य है जीवात्मा। और ये जो विश्व है उसका उपाधि, जीवात्मा का उपाधि क्या है, ये शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर, ये उपाधि है, दिस इज उपाधि। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम व्हिच शक्ति, माया शक्ति। दिस टू शक्तिस आर बिलोंग्स टू चित्त और अचित, बोथ आर बिलोंग्स टू चित्त और जड़, बोथ बिलोंग्स टू लॉर्ड। दिस जगत इज कंप्राइज्ड ऑफ चित्त एंड अचित, and that is total is belong to
Lord. So, and that's why Jagadapi Tvameva. You are this Jagat. Like that already. So, Jagadapi Tvameva. So, like this, everything is Lord only. That is being said here. That is being said here. So, because of how can you say this Jagat is by the, it's comprised of two energies, Chit and Achit. Chit is nothing but Jivatma, and that is Lord's, that is Shakti. And Achit, Jada, is the also, so Lord's energy, that's Maya Shakti. And these Shaktis are belongs to the Lord. So based upon this, how you can see this whole Jagat is Lord only? Because these Shaktis are nothing but the Shaktiman, and Shaktiman is the cause for this whole universe. So which is filled of the fill of the Jivas and their Upadis. So in this way, Karyam is not different from the Karanam. That is the funda. Based upon that, Karya is not different from the Karanam, where Karanam is the Krishna and Karyam is the Jagat. So being their truth, so Satkaryavada. What is Satkaryavada? It's a philosophy actually. By the whose philosophy this is? Is a philosophy of the Sankhites. Sankhites they say Karya is Satkaryavada. That means Karyam effect is not different from the Karanam. So that means the Jagat is Karyam and Lord is the Karanam. So that Karyam is not different from the Karanam is the Siddhanta. Like can you say curd is different from the milk? Curd is different from the milk? No. So without, if it is different from, then produce it without milk, then curd. Is it possible? No. That's why it is there. That means, so karyam, that curd is there in the milk. That's why it is. It's some process. It came out. So similarly, that in this way you can say karyam is not different from the karana. Similarly, this jagat is not different from the, so Lord. That is being said next. अभी थोड़ा सा बढ़ा देंगे स्पीड और भी 5 मिनट 10 श्लोक तो करेंगे उसके बाद इजी हो जाएगा कल करेंगे बाकी त्वां ब्रह्म केचिदवयञ्च्युतधर्ममेके एके परं सदसतो पुरुषं परेशम् अन्ये वयन्ति न वशक्तियुतं परं त्वाम् केचिन्महापुरुषमव्ययमात्मतन्त्रम् Those who are known as the impersonalists, Vedantis, regard you as the impersonal Brahman. Others known as the Mihakshar philosophers regard you as a religion. The Sankhya philosophers regard you as the transcendental person who is beyond Bhakti and wish, and who is the controller of even the demigods. The followers of the course of devotional service known as the Pancharatras regards you as being endowed with 9 different potencies. And the Patanjali philosophers, the follower of Patanjali Muni, regards you as the supreme independent personality of Godhead, who has no equal or superior. Thank you. What is being said here? So here Lord Shiva is saying, of course you are like this. You are Jagat and also never not you are different from that and everything coming from you in this and you are not Jada and you are Chit and you don't have any Adi Anta and but you are the Adi Anta of everything. Like that many things he said. But my dear Lord, but other philosophers they see you in different way because so they have their own philosophies and they describe you in different ways. How they describe? So that is being said here. These, Paresham, Parameshwaram, Tvam, Brahma, Ved, these Vedantis,
आप क्या बोलते, ब्रह्म करके बोलते हैं, निर्गुण निर्विशेष चिन्मात्र सत्ता करके बोलते। कौन? वेदांती। वेदांती आपको ब्रह्म है करके एड्रेस करते हैं। ये जो मीमांसक लोग हैं ना, आपको धर्म है करके बोलते हैं। धर्म, भगवान को कहां तक देख पाते हैं? भगवान से दिए गए धर्म तक ही देखते हैं। एब्सोल्यूट ट्रुथ माने धर्म, लेकिन उसको कौन दिया और उसके ऊपर कौन है ये नहीं देख पाते वो लोग। माने उनका ट्रूथ थोड़ा तक की, माने जो सत्य में कुछ बात तक की जान पा रहे हैं। ये जो 6 फिलॉसफीज है वो सभी भी शास्त्र के अनुसार ही दिया गया फिलॉसफी से, इसलिए वो सभी आस्तिक ही हैं। लेकिन वो सत्य को थोड़ा थोड़ा मात्रा में देख पा रहे हैं। जैसे हाथी को एकदम पैर पकड़ के कोई बोल रहे खंबा, ऐसे पूछ पकड़ कर रस्सी, ऐसा वो लोग पूरा ब्रह्म पूर्ण परम परम तत्व श्री कृष्ण भगवान यशोदानंदन, और उनको अलग अलग देख रहे हैं लोग, अलग अलग रूप से, किसी किसी का अज्ञानता के कारण। तो माने इधर ये लोग कैसे देख रहे हैं? मीमांसक लोग धर्म के रूप में देख रहे हैं भगवान। और सांख्य वाले ये प्रकृति पुरुष से एक अलग है, एक परम, एक तत्व है, ऐसे इसे देखते हैं। प्रकृति पुरुष से पर है ऐसे देखते हैं। और ये जो पांच रात्र, पांच रात्र वाले कैसे देखते हैं? नौ शक्ति से युक्त है करके देखते हैं। कौन है नौ शक्ति? सो ज्ञान, पृथ्वी, सत्या, ईशाना, अनुग्रह, हाँ काटे, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया योगे, क्रिया योगे, पृथ्वी, सत्या, ईशाना, अनुग्रह। और एक क्रिया योगे, क्रिया और योगे, ये दो अलग अलग है, आप ऐसा लेना चाहिए। नौ शक्तियों से युक्त है करके देखते हैं। कौन? पांच रात्रिक वाले। कौन है नौ शक्ति? विमला एक है, उसके बाद उत्कर्षिणी, तीसरा शक्ति ज्ञाना, चौथा शक्ति क्रिया, पांचवा शक्ति योगा, तो छठवा शक्ति पृथ्वी, सातवां सत्या, आठवां ईशाना, और नौवां अनुग्रह। इस प्रकार ये जो पांच रात्रि वाले आपको नव शक्तियों से युक्त है करके देखते हैं। नवभिश्चक्तिर्शक्तिभिर्युतम मिश्रितम, तो माया, और नव शक्ति से युक्त है, ये माया से परे है करके देखते हैं। माने जैसा अभी माया में, इधर माया में अलग अलग शक्तियां है ना, या नहीं? ये तो महामाया में, वैसा ही योग माया में भी कई प्रकार की शक्ति हैं। पराश शक्ति विविध श्रूयते, भगवान की जो शक्तियां हैं अनेक हजारों करोड़ों हैं शक्तियां, एक नहीं। उस स्वरूप में भी कितना प्रकार की शक्ति है, अनेक है, उसमें कुछ इधर गिनती की है। विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया योगा, पृथ्वी, सत्या, ईशाना, अनुग्रह। तो ऐसा देखते हैं। और पतंजलि वाले क्या देखते हैं? भगवान को महापुरुष है करके देखते हैं उस फिलॉसफी के अनुसार। लेकिन इन सब में से बेस्ट क्या है? ठीक है, अभी 9 बज गए, सब थक गए लग रहे हैं। कल पूरा करना ही चाह रही कल फ्लाइट में ले जाएंगे हम लोग को। और 2-3 श्लोक है, थोड़ा कमेंट्री है उसके बाद स्टोरी में। हाँ, पांच रत्न से डिवोट। नेक्स्ट श्लोक में वही बोला जा रहा है, ये पांच रात्रि का ये लोग ही सही आपको जानने वाले हैं, बाकी सभी अच्छा से जानने वाला नहीं, थोड़ा पार्शली जानने वाले। वो अपना मत भी वही है, क्योंकि वो भी भक्त है, उनका मत भी वही है, और भक्तों का भी मत ही पांचरात्र मत है, और भगवान का मत भी वही है। वो खुद पांचरात्र को बोले हैं, पांचरात्र से कृत्न से वक्ता। पांचरात्र का पूरा पांचरात्र बोलने और के वक्ता कौन है? वो तो भगवान ही है। तो नारद मुनि उसने है और लिखे, भगवान ही वक्ता है, पांचरात्र का वक्ता है। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की, वंदना श्रीमद् भागवत की।